about Day projects and others, GIZ has been extensive support for us. I would also appreciate the role of Pakistan Engineering Council for extending their support when we were assigned a task on a very short timelines to revise the building code. I am also grateful to Ministry of Climate Change and other agencies for helping us in developing our first ever EV charging infrastructure regulations. So I think when we look into this whole process, this is an ecosystem where we are working as a team, where we are working, getting support and extending support to all other players, to all other stakeholders and agencies in this process. In 2019, November, when I took the charge as managing director of NEECA, I must say that we were dormant at that time. It took us 3 years, more than 3 years, to revitalize the organization. And we started with the very simple thing of 3 steps that we have to institutionalize. There shouldn't be an organization that people just go away and the organization will abolish or just get dormant. And then how we can operationalize. We did all our efforts to do our homework, put things in place. And I think with all these regulations, policies, action plans, our human resource, the budget allocations from the government, from the support of donor and different programs that has been taken, and especially a lot of the minimum energy performance standards being developed with the support of JICA and CLASP and other organizations. I think now we are in a stage where we can start the implementation. And this action plan actually makes us that we should focus now on implementation and get things done. Today's session, where we will be presenting an action plan, which will be for 2030 from 2023, has been focused, and my colleague will be presenting on it, has some major aspects which need discussion, and we are grateful for Mr. Shahid Khaqan Abbasi, Defense Minister Khwaja Asif, and Jahazeb Saab, advisor to Prime Minister, because all of these seniors are respected guests, were involved in all this process at different stages. And they have been very great support and guidance for us in all these processes to move this agenda forward. Once again, I would like to thank you all for joining us today. And I hope you will have a very productive session today. Thank you very much. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, we are honored to have the Federal Minister, Mr. Agha Hassan Baloch, for Science and Technology with us. Let us welcome him with a round of applause to come on stage for the opening remarks. Please, sir. यहाँ तशरीफ फरमा ख्वातीन वज़रात, फेडरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला साहब और दीगर जितने भी ख्वातीन वज़रात हैं, मैं आप तमाम को वेलकम कहता हूँ। ख़ासकर जैसी साहिबा को जिनकी ताउन से प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। यकीनन आज हमारे लिए बाइस मुसरत दिन है कि निका के एमडी साहब सरदार मोहसिन और फेडरल मिनिस्ट्री की कोशिशों से, काविशों से और मुसलसल जद्दोजहद से हमने मुख्तसर अरसे में जो कामयाबी हासिल की है, यकीनन आज प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब जो एक फाल और मुतरक वज़ीर आज़म हैं और
उनकी कोशिशों, उनकी हिदायत और रहनुमाई की बुनियाद पर हमने मुख्तसर अरसे में जो एक बहुत बड़ा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोर्स के हवाले से जो हमने मंजूर करवाई, यकीनन वो इस मुल्क के में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से हम समझते हैं कि निका पूरे मुल्क में, बिलखसूस बलूचिस्तान में सोलर से मुतल्लिक, एनर्जी कंजर्वेशन से मुतल्लिक जो पॉलिसी जो इस इदारे को फाल और मुतरक बना रहे हैं, मुख्तसर अरसे में हम समझते हैं इस वक्त हमारी इकानमी जो मुश्किलात का शिकार है, यकीनन जब एनर्जी कंजर्वेशन या हम इसे कन्वर्ट कर देंगे सोलर सिस्टम में। फरवरी में हमने फैन और बल्ब के हवाले से जो पाबंदी लगाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मुल्क में बिजली बचा सकें और इसके दूर रस नताइज बरामद हो सके। मस्बत एक ऐसा सोच हम दे रहे हैं लोगों में ताकि हम इस मुल्क में जो क्राइसिस है एनर्जी का, वो बड़ी हद तक ख़त्म हो। आज जिस तरीके से पीडीएम की मरकज़ी मखलूत हुकूमत मुल्क में काम कर रही है, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हम समझते हैं कि जो मुल्क का एक अहम जो इशू है, मसला है हमारे एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमारे सामने एनर्जी का है, उसके हल के लिए आज खाकान अब्बासी साहब जो इस कमेटी को ऐड कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है। आज जिस तरीके से अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, तजुर्बे के हवाले से जो काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके मज़बत नताइज बरामद होंगे। मैं आज इस बात का आदा भी करूँगा कि हमारे सामने इस मुल्क के इज्तिमाई मुफादात ज़्यादा अजीज़ है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मुल्क में हकीकी तरक्की और खुशहाली को मुल्क गामजन करवाएं। हकीकी तरक्की और खुशहाली तभी मुमकिन हो सकेगा जब हम एनर्जी क्राइसिस के हवाले से सलूशन की तरफ जाएं, जब हम अमली तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवाएं सोसाइटी में, जब हम जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके आइडियाज़, उनकी चेयरमैनों के आइडियाज़ या जो ऑफिसरान के आइडियाज़ को आगे ले जाकर सलूशन की तरफ जाए और मुल्क में एक बेहतर ऐसा सोच डेवलप कराए कि हम इस मुल्क की इज्तिमाई मुफादात हमें ज़्यादा अजीज़ है और हम ज़्यादा कोशिश करें कि हम मसलों को हल करें। बलूचिस्तान में विंड के हवाले से, सोलर के हवाले से, एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से बहुत से, अगर क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है, तो जिस तरीके से हम वहाँ पे शायद बिजली ना दे सके, लेकिन सोलर के हवाले से जो हम वहाँ पे तब्दीली लाना चाहेंगे तो उसके भी बहुत से दूर रस नताइज बरामद हो सकेंगे। एनर्जी आज मुल्क का एक बड़ा इशू है जो हल होने की तरफ जा रहा है। बेसिक जो फाउंडेशन है मियाँ साहब ने रख दी है। अब आने वाले वक्तों में जो भी क़यादत करे इस मुल्क का, उसकी जिम्मेदारी है कि वो मज़बत प्रोग्राम्स, पॉलिसियों को इसी तरह तवालत के साथ आगे बढ़ाए, तसलसल के साथ आगे बढ़ाए, मुस्तकिल मिजाजी साबित करने के साथ आगे बढ़ाए ताकि हम मसलों को हल कर सकें। तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अप्रैल 2023 में वफाकी काबीना ने पाकिस्तान की एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन पॉलिसी मंजूर करवाई, जो मरकज़ी काबीना का एक बहुत बड़ा फैसला था, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके बाद साथ ही भी नेशनल एक्शन प्लान बराए एनर्जी कंजर्वेशन कंट्रोल बनाने के हवाले से जो पॉलिसी हमने मुशावरत शुरू की, मुख्तलिफ आइडियाज़ लिए, तो ये भी बहुत बड़ी पॉलिसी एक सिंगल मील साबित होगा एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से। तो आज मैं निका के एमडी साहब को, अपने सेक्रेटरी साहब को,
इसकी पूरी टीम को और जो भी इंटरनेशनल जिजा यानी जो डोनर एजेंसीज को, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक है या दीगर जितने भी डोनर एजेंसीज हैं, उनका भी मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस मुतल्लिक, इस शोबे से मुतल्लिक वो एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर मैं जितने भी यहाँ पे बैठे या बैठी ख्वातीन वज़रात हैं, उनका भी मशहूर हूँ। यकीनन आप तमाम ख्वातीन वज़रात, मेहमान गिरामी, मज़ीद हम निकाह को मजबूत बनाने या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट को बेहतर तजावीज़, बेहतर आइडियाज़ देते रहेंगे, क्योंकि जब मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन होगा, जब मुल्क फाल और मुतरक होगा, तो इसमें हमारे आने वाली नस्लों का सबकी भलाई है। जब जब सबकी भलाई है, तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि आप अपने भी मज़बत किरदार अदा करते रहे और अपने तजावीज़ से हमें मुस्तफ़ीद करते रहे। ख्वातीन हज़रात, मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ, बिलखसूस सेक्रेटरी साहब का, MD निकाह का, कि जो आए और इस हालात में जब सेक्रेटरी साहब की तबीयत भी बेहतर नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो फ़ाल और किरदार, मज़बत किरदार अदा कर रहे हैं डिपार्टमेंट के हवाले से, यकीनन हमारे लिए, सबके लिए बेहतर है। आप तमाम दोस्तों और भाइयों और बहनों का मैं मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, sir. Before we proceed further, it is my distinct pleasure to invite Mr. Abdullah Khan Sumbal, Federal Secretary for Science and Technology, whose visionary leadership and unwavering dedication to the field have been instrumental in driving progress and transforming lives. Sorry. Now it's a time for a tea break. I would like to request all our worthy guests to move forward. Tea is waiting for you. We will resume here at 11, maybe 11 a.m. Okay. Assalamu alaikum. Thank you. ख्वाजा आसिफ साहब तो बस अभी अनाउंस करूंगी इसके बाद। हाँ जी।
अली साहब, सभी साहब को बताएं, सभी साहब को बताएं, सभी साहब को बताएं, मिनिस्टर साहब आ गए हैं, फेडरल मिनिस्टर डिफेंस। अच्छी सी लेना, अच्छा। Welcome back. Before we proceed further, it is my distinct pleasure to invite Mr. Muhammad Abdullah Khan Sumbul, Federal Secretary for Science and Technology, whose visionary leadership and unwavering dedication to the field have been instrumental in driving progress and transforming lives. Please put your hands together and join me in welcoming to the stage Mr. Muhammad Abdullah Khan Sumbul, Federal Secretary for Science and Technology. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Khaja Asif Saab, Minister for Defense, dignitaries, partners and colleagues from the international organizations, the World Bank, Asian Development Bank, the UN agencies, GIZ in particular. Ladies and gentlemen, it's a matter of great honor for me to be with you and address you. This marks a very auspicious day for us in more ways than one. We were looking forward to it for the last, I would say, at least a month. And there is a cabinet level committee that has been mandated with the task to take this agenda forward. It was constituted under the directions of the Honorable Prime Minister, and Honorable Khaja Asif Saab was actually requested by the Prime Minister himself, I'm told, that he should also oversee the finalization, not just of the policy, which has already been approved by the cabinet, but the action plan as well. And we were having a session of that subcommittee under the chairmanship of Shahid Khakan Abbasi Saab, who we believe would join us in a short while. And while we were discussing it, he was of the opinion, and for that matter, the entire committee was of the opinion that we need to be very inclusive and participative while finalizing
the action plan, because the action plan, as the name would suggest, has to be made totally actionable on the ground in its entirety, with all its dimension, gelling together and converging towards the overall goal, so as to say. So this action plan is, I would like to submit in all humility and earnestness, is very much in line with the policy which stands approved. And the policy which is approved obviously has the sanction of the entire, and the support of the entire government. So we would like to believe that this has the highest level of ownership now. What we really need to do, and I think this is a major step forward today, is to convert this policy into something which is very doable, something which is actionable and implemented over the next 7 years. Because that's the time horizon that has been defined by the policy, and the action plan obviously has to be on the same time scale. So that said, our desire and our first feeling about the action plan was that it should be very inclusive. It should have that outside in perspective that is so very vital. This is my conviction, and I'm sure I've learned from some very good professionals. I can't claim to be one myself, but I've been lucky and fortunate to have worked with very good professionals in the civil service and from the world of politics as well. And I've always been advised and told by them that you need to be open and inclusive and participative. So this is the name of the game. We live in the age and paradigm of governance where the triangulation of the state, the market, and the civil society is very much there. And we just simply cannot ignore the market as well as the civil society. And the civil society obviously includes intelligentsia, think tanks, and the media as well. So the world outside has to come in in a big way to support major governmental initiatives. So this is the fundamental mindset behind it. So without belaboring on this point any more, let me submit to you what I feel is really significant about the action plan. As I said, the triangulation of the state, the market, and the civil society figures prominently in pretty much every policy or strategy level intervention of the government. This has to be, kept in view all the time in this day and age. We have the PM's patronage, the cabinet's ownership because of the approval itself. And our minister, he just, testified to his commitment in very clear terms. And we're very fortunate to have somebody who has been the leading light of, power efforts going into removing the power crisis in the shape of Haj Asif Shah, who's always, led this major effort in Pakistan. And Shahid Khaqan Abbasi Sahab obviously also had a major role to play during the tenure of the previous government from 2013 to 2018. They were the leading lights of that effort. And I'm sure they had very clear views and very clear advices on energy conservation as well. And energy conservation obviously has to be defined at a broader level. And I'm sure you've already figured out, you've been told that it's not really singularly focused on power alone. It is multidimensional. It talks about agriculture, it talks about industry, and it very clearly and pointedly talks about housing as well. So all these major areas of socioeconomic life have to work in tandem, work closely, so as to really get us results. So all the stakeholders that have been on board, and I'm sure I was just meeting a few during the tea interval, it was very gratifying to note that pretty much everyone has come up and contributed. So I can't thank you all enough. It's very, very significant. Your inputs are very significant, and we would, really be keeping in good stead if we keep believing in your opinions and your advice. Let me also say that energy and power, for that matter, energy in particular, has reached crisis dimensions very often in Pakistan. And we may be getting into a situation pretty soon that we would be grappling with another crisis. So this conservation plan, this energy conservation plan, is going to be massive. I was just talking to one expert from the private sector who was very kind to give this piece of advice to me, that
action plans are as good as their implementation. They're not worth anything if they are not implemented. If they're consigned to bookshelves and to cupboards, I think that's very unfortunate. So that's been kind of a history in Pakistan, that very good reports, very good action plans have not been implemented in the right spirit, in the right manner. And we really make a commitment here, and we should make a commitment here, that this will be implemented in its totality, with all its dimensions, with all the stakeholders working with us. Even during the implementation phase, we would like to have your support and have you standing right behind us. So that is the spirit of inclusion. This is very comprehensive. It goes into different directions. I was just noting that the plan proposes as many as 29 priority actions. Obviously, a vast array of actions are covered, and as many as 109 energy efficiency and conservation tasks, 109 tasks for us. So without any, legal support, backstopping, this may not be possible. Again, thanks to our, friend from the private sector who was just speaking to me during the tea break, and to the able guidance of Shahid Khakan Abbasi Saab, who was with us 2 weeks back in the ministry. We were very clearly told that and advised that without legal backstopping, without major, legislative effort, this may underachieve. This action plan may underachieve. So that's a point very well taken, and we intend to take it in right earnest. The MD NEECA was telling me during the break again that we have this 2016 Act, which could be amended, as per demands, but I think we could actually be looking at, and we were actually advised, and I would like Khaj Asif Saab to very kindly comment on it as well, that whether we need a full-fledged law for it, just a standalone law, in keeping with the other ancillary legislation, if we need that or not. So we are also looking at building conservation codes, which are going to be massive and very extensive in their purport and intent. It will again need a lot of consultative process. Again, we would like to be inclusive there. And we would really like to believe that it is seemingly a very technocratic effort, but it should not be, done technocratically. It should be done in a very inclusive manner. We'd like to take it to the media, because obviously an energy conservation or energy efficient plan would really need to be widely disseminated and shared, so that the behavior change communication part of it is handled very well. So that is also very well understood. I think we are guided by very good experts. The MD NEECA was also, made a lot of sense when he said that this is one effort which will, cut across sectors. So there's climate change, there is agriculture, there is industry, and obviously the ministries of housing and the provincial governments. After 18th Amendment, we obviously rely heavily on provincial governments as well. And my experience is more in line with what the provincial governments do. And I've always understood that if there's harmony and total understanding between the federal government and the provincial governments when it comes to major efforts and major interventions, it augurs well for implementation. And one of our agencies, the Ministry of Science and Technology agencies, the PSQCA, the Pakistan Standards and Quality Control Authority, will also have a major role to play. And we believe that it will have very clearly delineated interventions for it under the action plan as well. So both PSQCA and NEECA should be working very closely and in total unison and harmony, so as to really gain results and not underachieve. Let me sum up by saying that today's consultation is essentially focused on, not limited, but focused on soliciting feedback and insights on essentially three things. The National Energy Efficiency and Conservation Action Plan, which spans over 7 years, the Energy Conservation Building Codes 2023, which are being framed and being subjected to further feedback and opinions, and the Pakistan Energy Label Regulations on electric appliances and EV charging station infrastructure. So your opinion, your feedback, once solicited, once provided to us, would be instrumental in taking these three areas forward very meaningfully, very purposefully, and that's what we aim to do today. I'm sure the session, the subsequent sessions today would be very meaningful, would be, very well participated. We are very, strengthened and confident that
by the fact, by your mere presence as well. I'm sure you really make it count and give us feedback which would be grounded in reality and which would take this agenda forward very meaningfully. I'm honor bound to thank you all from the core of my heart, from the entire ministry, and would again make a commitment here, a very solemn pledge that we would go into implementation with our eyes and ears open. We really like to do a good job of it, do it, in a very strategic manner, timeline and its activities as well down the road. We are looking, obviously, we're facing a political transition, and I think despite this, the fact that we have two federal ministers already coming here and gracing this occasion, and another luminary to follow, I think we are really in safe hands, and the intent and the desire of the government to get into implementation in its real sense of the term is very much there. So we bank on that, we rely on that, and we believe that inshallah we'll be successful in implementation also. So again, let me thank you all, and I hope that we have a wonderful day and we finish very well. Thank you. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, I am delighted to share with you that the National Energy Efficiency and Conservation Authority has taken several proactive steps to promote energy efficiency and conservation throughout the country. We are going to implement policies, launch awareness campaigns, and introduce incentive programs to encourage individuals, businesses, and industries to adopt energy efficient practices. Let me have the honor of inviting Mr. Khaja Muhammad Asif, Federal Minister for Defense and the convener of High-Level Committee on Energy Conservation, to come on stage for a keynote address. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम MD नीका मुअज़्ज़म साहब, जनाब अब्दुल्ला सुंबल साहब, और नहायती काबिल एहतराम हाज़रीन, आज से तकरीबन 1 साल कबल या थोड़ा सा ऊपर ये एनर्जी कंजर्वेशन जो है इसका सिलसिला शुरू हुआ, और it was a good experience for me. I was educated into so many things which were not known to me. मैं कुछ 4 साल Minister of Water and Power रहा from 2013 to 2017. And I realized कि जब तक इन दोनों चीज़ों की, पावर की और पानी की कंजर्वेशन जो है वो नहीं होगी, ये कल्चर ऑफ वेस्टेज जो है इसके आगे बंद नहीं बांधे जाएंगे, तो आप जितना मर्जी जो है इन्वेस्ट करते रहें उसका कोई फायदा नहीं हो। हमारे पास आज भी उतना ही पानी है जितना आज से तकरीबन 60-65 साल पहले हमारे सिस्टम में था। तकरीबन 150 या 160 मिलियन। प्लीज आस्क दीस पीपल टू स्टे क्वाइट, यहाँ बातें हो रही हैं पीछे। और आज भी उतना ही पानी है। कुछ कंजर्वेशन के लिए डैम्स बनाए गए पानी के, कुछ ना बने, और ज्यादातर पानी जो है वो मसलन आज भी बारिश में, अभी अंदर आया बारिश हो रही थी, बहुत बारिशें हुई, पिछले साल भी बारिशें हुई, लेकिन पानी अल्टीमेटली जो है वो समुंदर में चला गया।
हमारे पास कोई नेशनल एक्शन प्लान टू कंजर्व वाटर नहीं। हमारे आज भी इरिगेशन के जो तरीके हैं वो मोहनजोदारो के वक्त के हैं, 6-7 हजार साल पुराने। फ्लड इरिगेशन, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, और हम आज भी फ्लड इरिगेशन में मसरूफ हैं और उसको अबैंडन नहीं कर रहे। और जो मॉडर्न तरीके हैं इरिगेशन के, कम से कम गवर्नमेंट के लेवल पे कोई मेजर एफर्ट नहीं है। कोई प्राइवेट किसी ने एफर्ट किया हो तो अलग बात है। नहरों के जो है मोगे तोड़ के जो है पानी चोरी किया जाता है ऑल अलोंग जितनी भी हमारी नहरें हैं, और उन मोगों से जब पानी फसलों को दिया जाता है वो इतना ज्यादा पानी वेस्ट होता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इस सिलसिले में मुझे जब मिनिस्टर था आगाही हुई, उसके बाद जो है पावर सेक्टर में जिस तरह वेस्ट पावर वेस्ट हो रही है, बल्कि मैं कहूँगा कि इन सेक्टर्स में जो है ना करप्शन और वेस्टेज दे गो हैंड इन हैंड। इन दोनों की जो लीथल कॉम्बिनेशन है इन चीज़ों की, उसने हमारे नेशनल रिसोर्सेज को जो है ना वो बिल्कुल ज़ाया कर दिया। को वेस्टेज से जो बचता है वो करप्शन में लुट जाता है। ये एक बड़ा मेजर इसका एफर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस है इसके लिए। क्योंकि जो करप्ट अनासर जो मेजॉरिटी में है, लेट्स फेस इट, हमारे माशरे के, वो इसको रेजिस्ट करते हैं। मौजम साहब विल बेयर मी आउट के पंखों में या बल्ब्स में जब हमने एक चेंज लाने की कोशिश की या इलेक्ट्रिकल मोटर बाइक्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, तो किस तरह रेजिस्टेंस जो आई, और आज भी रेजिस्टेंस आ रही। ये ह्यूमन नेचर है कि किसी भी मेजर चेंज को जो है ना इंसान जो है वो रेजिस्ट करता है, सोसाइटीज रेजिस्ट करती है। लेकिन ये मुस्तकिल मजाजी चेंज लाने वालों की होती है कि वो उन को अबैंडन ना करें उन एफर्ट्स को, और वो चेंज ला के छोड़ें। और इसका मेजर जो है वो एफर्ट जो है वो हमें एजुकेशन के जरिए जो है ना स्कूलों में एलिमेंट्री लेवल के ऊपर बच्चों को बताना चाहिए कि टैप जो है वो बंद करनी चाहिए। टैप में जो है वो कतरे पानी के जो गिरते रहते हैं, हमारे यहाँ पे आम है, उसको बंद होना चाहिए। पानी कम इस्तेमाल होना चाहिए। सारी दुनिया में आप जो पानी जो है वो ये नहीं है कि आप टैप खोलते हैं और उसके बाद टैप ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है आप सब जानते हैं टैप्स बंद हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इस किस्म की जो है वो एफर्ट जो है वो नहीं हुई। लेजिस्लेशन की बात हुई, हमारे जो स्टैट्यूट बुक्स हैं उनके ऊपर तमाम कवानीन मौजूद हैं। किसी कानून की जो है वो गुंजाइश नहीं है मजीद जो है। अगर कानून कवानीन जो मौजूद हैं हम उनको इम्प्लीमेंट कर लें तो हमारी कौम जो है सुधर सकती है। वही इम्प्लीमेंट नहीं होते, नई लेजिस्लेशन फिर किताबों में। और लेजिस्लेशन को फिर जो लोग हैं हमारे यहाँ पे, ऐसे अक्लमंद लोग हैं जो 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 ये सारी वारदातें करते हैं, कि उन्हीं लेजिस्लेशन को यूज करते हैं टू रिटार्ड द एफर्ट्स ऑफ ब्रिंगिंग ए चेंज। उन्हीं लेजिस्लेशन को, ये हमारे दो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लें, ऐसे ऐसे तरीके इजाद करेंगे कि अकल जो है वो दंग रह जाती है कि किस तरह रोकना है ये एफर्ट को जो है। एफर्ट जो है मसलन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर बाइक्स का, अगर हमारे यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाए मोटर बाइक्स की, तो मेजर कंजम्पशन जो है हमारी फ्यूल की वो मोटर बाइक्स की है। हमारे यहाँ पे मिलियंस में मोटर बाइक्स पर एनम जो है वो हमारे सिस्टम में आ रही हैं। एम आई राइट मौजम साहब?
और सबसे ज्यादा जो अगर मोटर बाइक्स आ जाएंगी, लेकिन जो लोग इस वक्त 2 3 4 मोटर बाइक्स बनाने वाले हैं वो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। फिर उसमें जो है वो माशाल्लाह हमारा एफबीआर भी जो है मुख्तलिफ तरीकों से जो है उसको फॉर वट एवर रीजन, मैं आई रिफ्रेन फ्रॉम डिफाइनिंग दोज रीजंस, उनको रोकते हैं। ये बड़े मामूली एफर्ट्स हैं, बट दे विल ब्रिंग ह्यूज डिविडेंड्स टू आवर नेशनल एक्सचेकर। कि मोटर बाइक्स चेंज हो जानी, पानी जो है वो उसका तरीकाकार जो है इस्तेमाल का, खुसूसन इरिगेशन के लिए 69% हमारा पानी जो है इरिगेशन में सर्फ होता है, बाकी दूसरे उसमें सर्फ होता है। यहां पे बात हुई बिहेवियर चेंज की। बिहेवियर चेंज मैं फिर रिपीट करूंगा कि बिहेवियर चेंज जो है अडल्ट्स में बिहेवियर चेंज जो है बड़ा मुश्किल होता है। बिहेवियर चेंज जो है वो बच्चों के लेवल पे आपको इनकलकेट करना पड़ेगा, ताकि वो बच्चे जो हैं उन आदात के साथ या उस बिहेवियर के साथ जो है वो बालिग हों। इट शुड बी पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। मैं जब कहीं आज से कोई 60-70 साल पहले स्कूल में गया तो ये चीजें होती थी, वहां पे पढ़ाई जाती थी, अब नहीं पढ़ाई जाती। ये पिछले 25-30 साल में, 40 साल में, मैं लंबी चौड़ी सियासी बात नहीं करना चाहता, हमने नई निजात की नई राहें ढूंढ ली हैं खूसूसन 80 की दहाई से, जिसका रोजाना हम मुशाहिदा करते रहते हैं और उसकी कॉस्ट पे करते हैं। ये जो दहशतगर्दी के हमले होते हैं, हमने जब एफर्ट करना होता है, हमने एफर्ट करना था कि अफगान जंग में हमने जाना है तो हमने अपने मजहब चेंज करना है, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। चेंज से मैं नौजुबिल्ला कोई और बात नहीं कर रहा है, मैं फतवा ना लग जाए। ये एक ऐसा एफर्ट किया कि आज जो है कम से कम जो पढ़ाया जाता है मजहब जो है हमारे स्कूलों कॉलेजों में, जो मैं स्कूलों कॉलेजों में जाता था वो नहीं था ना। पाकिस्तान की तारीख वो थी, पाकिस्तान की तारीख भी बदल दी कि पाकिस्तान किस तरह बना, पाकिस्तान में किस तरह फॉर्मेटिव ईयर्स जो थे 10, 15, 20 साल, 30 साल किस तरह गुजारे हैं। हिस्ट्री डिस्टॉर्ट की गई। तो जब इस किस्म की परवर्टेड किस्म के एफर्ट्स के लिए इतनी कोशिश हो सकती है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और वो इतने मुहीब किस्म के असरात छोड़ सकते हैं, तो ये नेक काम के लिए क्यों नहीं इस तरह इतना एफर्ट हो सकता कि बिहेवियर चेंज जो आए, उसके लिए तालीम में जो है चीजें डाली जाएं, उसके लिए जो है वो एक अवेयरनेस कैंपेन इतनी हो कि हर जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर वो कैंपेन जो है आपको कन्फ्रंट करे। चाहे आप फैमिली में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप किसी बिजनेस प्लेस में हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप बस में हैं, आप किसी मेट्रो में हैं, हर जगह आप दुनिया में देखेंगे इसी तरह ही होता है। हर जगह ये होता है। जिन मुल्कों में बेशुमार एनर्जी अवेलेबल है, वहां भी जो है वो स्विच के ऊपर लिखा होता है कि इसको ऑफ करें जब आप कमरे से निकल रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा एफर्ट नहीं है। 12,500 मेगावाट जो है पंखे कंज्यूम करते हैं यहाँ पे गर्मियों में। एम आई राइट? 12,500 और 4,000 कंज्यूम करते हैं मेगावाट जो है वो एयर कंडीशनर्स। ये मैं पीक लोड की बात कर रहा हूं। 30,000 जब पीक लोड होता है, अब तो 31-32 हो गया, 30,000 पीक लोड जब होता है तो उसमें 17,000 जो है बिजली कंज्यूम पंखे कर रहे होते हैं और एयर कंडीशनर कर रहे होते हैं। पंखे जो है वो 130 वॉट्स के भी आजकल मेजॉरिटी वही यूज हो रहे हैं। 100, 120, 90 इस तरह के यूज हो रहे हैं। वेयर एज हमारे मुल्क में ही या सारी दुनिया में
अब 40 के भी, बल्कि 30 के भी वॉट्स के जो है, आप देख लें कितनी कितनी मैसिव जो है ना वो चेंज आएगी अगर हम पंखे जो है ओवर लेट्स से 3 years और 4 years और 5 years हम पंखों को चेंज करें। फिर हमारा बिल्डिंग कोड जो है, हमारी हमारी कंस्ट्रक्शन जो है अब शीशा, सीमेंट और स्टील जो है उसमें इस्तेमाल हो रहा है, लोहा इस्तेमाल हो रहा है। हमारी आबो हवा जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पे जो 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल या इससे भी ज्यादा जो बिल्डिंगें सर्वाइव कर रही हैं, ना उनमें शीशा इस्तेमाल हुआ है, ऑर्नामेंटली इस्तेमाल हुआ है, और ना उनमें सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, ना लोहा इस्तेमाल हुआ है, और बिल्डिंगें सर्वाइव कर रही हैं। आप ज्यादा दूर नहीं है, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में जाके देख लें, कुछ ज्यादा 40-50 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, क्या हाल है उन बिल्डिंगों को जाके देख लें। आप एयरपोर्ट देख लें इस्लामाबाद का जाके, मेरा 5-6-7 साल हुए हैं बने हुए, क्या हालात हैं इन बिल्डिंगों के। ना वो एनर्जी क्या कहते हैं से कंपैटिबल है कि सेव कर सकें ये बिल्डिंगें। मैं 2 जगह पे कैद रहा हूं। अगर आप किसी ये जो मॉडर्न जेलें जो है ना लाहौर वगैरह की जो बनी हुई हैं, वहां पे आप बड़ी मुश्किल कैद है। अटक किला जो है शहनशाह अकबर ने बनाया, वो सारा गारा इस्तेमाल हुआ है, 36-36 फुट की दीवारें हैं। वहां पे आबो हवा बेहतर होती है, वैसे कैद कैद होती है, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं कि जो जो अंदर की आबो हवा जो है किसी घर की, किसी ऑफिस प्लेस की, या किसी इवन जेल की भी, अगर आपके लोकल जो यहाँ पे जो आपका एनवायरनमेंट है अगर उससे कंपैटिबल, उससे फ्रेंडली जो है कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कोड हो, आपके यहाँ पे पानी जो है इंडिया में, दिल्ली के अंदर जो है आप घर नहीं बना सकते जब तक आप पानी हार्वेस्ट करने की जो है वो फैसिलिटी नहीं उसमें देंगे। यहाँ पे हमारा पानी जो है छत से जो गिरता है वो सीवर में जाता है। इट इज क्रिमिनल कि आप अल्लाह का दिया हुआ पानी, साफ पानी जो है आप उसको सीवर में फेंक रहे हैं। तो ये एक लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे खुशी है यहाँ पे ऐसे ख्वातीनों हजरात बैठे हुए हैं जो जो हर लेवल पे ओपिनियन जो है चेंज कर सकते हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं। हम सियासतदान जो हैं वो ओपिनियन मेकर्स इन द ट्रू सेंस जो है ना वो नहीं होते। हमारे नज़र में हर वक्त जो है होता है कि हमारे स्टेप से या हमारे इस इनिशिएटिव से वोटर कितना अट्रैक्ट होता है और कितना नहीं अट्रैक्ट होता। और जब आप किसी चेंज, मेजर चेंज जो है पैराडाइम नई इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी एक नेचुरल रेजिस्टेंस होगी। मुझे फयाज साहब भी बता रहे थे, एनटीडीसी के वो एमडी थे जिस वक्त मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर था, टेक्निकल बात बता रहे थे, कुछ मेरी समझ में आई, कुछ ना समझ में आई, लेकिन इस किस्म के इनिशिएटिव जो है वो एक बहुत बड़ी चेंज जो है हमारी एनवायरनमेंट में भी ले से, दे आर एनवायरमेंटली गुड ऑल्सो, फ्रेंडली ऑल्सो, और साथ जो है उस कंजर्वेशन के लिए भी जो है उनके बेशुमार जो है फवायद होंगे। मैं आखिर में जो है मैं एक चीज जो मैंने, हमारे यहाँ पे पानी जो है ना वो उसका इंसेंटिव टू सेव जो है बहुत कम है। बिजली में डेफिनेटली, पावर में, फ्यूल में प्राइसेस जो इतनी हो गई हैं कि दे आर ऑलमोस्ट प्रोहिबिटिव। उनका यूज जो है वो पीपल आर नाउ फोर्स टू थिंक बिफोर फिलिंग देयर टैंक्स और पुटिंग ऑन द एसी
जब सरकारी होगा तो फिर तो जरूर चलाएंगे वो, लेकिन घर का होगा तो हो सकता है कोई थोड़ी सी होश से काम लें। सरकारी का तो रात को भी चलता छोड़ जाएंगे। यही मैं जहां भी मीटिंग में जाता हूं, सरदार साहब, मौजम साहब गवाह हैं, मैं कहता हूं यार ये खिड़कियां खोलो, ये ब्लाइंड्स ऊपर करो, ये शैंडलियर कैबिनेट रूम में बाहर दिन चढ़ा हुआ है, एक पूरी साइड जो है खिड़कियां हैं उनके ऊपर ब्लाइंड्स आई हुई हैं, और शैंडलियर जो है 4-5 मैसिव शैंडलियर जो है लाइट, और साथ उसके अलावा स्पॉट लाइट्स भी लगी हुई। वो अल्लाह ताला की रोशनी नेमत बाहर है। लेट इट कम एंड लेट इट एंटर योर रूम, let it enter your workplace, let it enter your homes. बारिश हो रही है, थोड़ी सी खिड़की खोल दें, वैसे ही एसी चलाने की जरूरत नहीं रहती। तो हमने ये खुसूसन जब बेगाने माल के ऊपर जो है ये सारा कुछ हो रहा हो तो हम बड़ी बेदर्दी के साथ फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन सरकार का जब माल हो। सरकार का माल जो है वो अल्टीमेटली घूम फिर के जो है आदमियों को बोझ तो है आम पब्लिक पे ही पड़ता है। हो सकता है हम पे ना पड़ता हो, जो प्रिविलेज क्लासेस हैं वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं वो उसको अवॉइड करने का। लेकिन ये चीजें जो है ये बड़ी कमिटमेंट और बड़ा मैसिव एफर्ट जो है ना उसके लिए चाहिए। 12-15 दिन के अंदर हमारी गवर्नमेंट जो है वो तहलील हो जाएगी, 3 महीने लगेंगे, इलेक्शन में नई गवर्नमेंट आएगी। लेट्स प्रे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए जिसमें कोलिशंस के जो है ना वो प्रॉब्लम्स ना हो। अगर कोलिशन हो भी जाए तो इस किस्म के जो नेशनल इश्यूज जो हैं उनके ऊपर एक इत्तेहाद हो, एक कंसेंसस हो, ताकि इनको एक कमिटमेंट के साथ और एक जो है सही ऑनेस्ट एफर्ट के साथ जो है इन चीज़ों को परसू किया जा सके। मैं बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन जो बातें मेरी समझ में आती हैं कोशिश करता हूँ कि उनको इस पैराए में बयान करूँ कि सुनने वालों को जो है वो सीधा सादा एक पैगाम पहुँचे, चाहे वो मैं पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ या पब्लिक में बोल रहा हूँ। बाज़-औक़ात जो है वो थोड़ा तल्ख हो जाता हूँ क्योंकि एफर्ट करते करते बड़ी देर हो गई है। जब एफर्ट जो है वो कहीं पहुंच ना सकें तो थोड़ी सी तलखी आ जाती। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। Thank you so much, sir. We firmly believe that your words of wisdom and encouragement will inspire our participants and ignite a passion for energy efficiency and conservation that will ripple through generations to come. Thank you so much. Ladies and gentlemen, let me welcome you again to the launch of the National Energy Efficiency and Conservation Awareness Campaign. As you all know, that we are gathered here with a shared commitment to address one of the most pressing issues of our time, energy consumption. The need to conserve energy and embrace efficiency measures is crucial as we strive to create a sustainable future for our nation. Dear audience, as we look around, we see a nation filled with an energy potential, but also a nation that faces significant challenges due to increasing energy demand and environmental concerns. Our consumption patterns have strained our natural resources and contributed to climate change. But now it's the time to take an action. Through this campaign, we aim to foster a collective responsibility towards energy efficiency and conservation. To make this campaign successful, we need your support, the media, the business, non-profit organization, and most importantly, the people of our nation.
Let us join hands in this noble cause for the sake of our environment and future generation. Now, without further ado, I officially declare the National Energy Efficiency and Conservation Awareness Campaign open. For this, I would request Mr. Khwaja Muhammad Asif, Federal Minister for Defense, to come forward and click the button. मैं एक चीज जो है वो कहना भूल गया था। मैं ओवर लास्ट 10 years मीडिया के साथ जब भी मैं प्रोग्राम करने जाता हूँ तो मैं जो एंकर पर्सन होते हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई 5-10 सेकंड का एक मैसेज जरूर दे दिए। किसी ने नहीं किया। सरमायादार हैं, they have absolutely no commitment to national development. Yes, they have commitment to development of their own personal wealth. मैं इसलिए कह रहा हूँ ये मीडिया लगा हुआ है, इनको मैसेज आना चाहिए। ये 10 सेकंड का ये इस एफर्ट के लिए, ये कंजर्वेशन के एफर्ट के लिए हमारा मीडिया के जो सेठ लोग हैं, तो 10 सेकंड का मैसेज देने को तैयार नहीं है। आप जितने बड़े बड़े जो एंकर पर्सन हैं उनसे पूछ लिए कि मैंने लिटरली हाथ जोड़ के कहा कि मुझे कह लेने दो, प्रोग्राम के अंदर कह लेने दो, अलहदा नाम कमर्शियल करो। यानी ये जो कहते हैं ना सब्लिमिनल इफेक्ट जो होता है बास कमर्शियल का, बड़ा इफेक्टिव होता है। किसी इस किस्म की कैंपेन डेवलप की जाए कि पानी के कतरे गिर रहे हैं, कि पानी वेस्ट हो रहा है, बिजली के पंखे चल रहे हैं, एनर्जी वेस्ट हो रही है, इस तरह और बहुत सी चीजें हैं। जिस तरह मैंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या किसी और जो ऑफिस में जिस तरह हो रहा है या होता था, ये शहबाज शरीफ ने उसको खासा कंट्रोल किया है। तो ये मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ये सेठ लोग प्ले नहीं करेंगे। माल जहां से इनको मिलेगा, जो बिकॉज दे आर नॉट जर्नलिस्ट, इनका जर्नलिज्म ये कारोबार है उनका। और बाज मीडिया के चैनल इसलिए खुले हुए हैं कि वो उन चैनल्स को इस्तेमाल करते हैं बाकी अपना जायज नजायज कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं नाम ले सकता हूं, मैं बिल्कुल, वो अपने चैनलों में नुकसान उठा रहे होते हैं लेकिन कहीं और उनको प्रॉफिट हो रहा होता है। कि मसलन मेरा जैसा कोई बंदा जो बोला है, जायज नजायज गुफ्तगू की है, उसके खिलाफ कोई चला दिया कुछ, तो ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम and needs huge effort on all। ये भी मीडिया के बंदे, ये और इनका चैनल कोई पैसा नहीं कमा रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मकसद इनका हल हो रहा होगा ना। तो मैं बता रहा हूं कि यहां पे ये इतने इंट्रेंस्ड है, यहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट, दिस orgy of corruption and wastage is so damn rampant. उसके लिए you need a very, very committed and a gigantic effort to stop it here. Thank you very much.
Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, the next session is on the National Energy Efficiency and Conservation Action Plan 2023 to 2030. And I'm delighted to announce that Mr. Khaja Muhammad Asif, Federal Minister for Defense, will be chairing the session. Ladies and gentlemen, the National Action Plan for Energy Efficiency and Conservation in Pakistan has been developed and shared with all stakeholders for their comments and suggestions. It has been a very comprehensive process that covers all sectors of the economy. Now, I would like to invite Mr. Sabi Haider, Director, Strategy Management Office, National Energy Efficiency and Conservation Authority, to come on stage to present the National Action Plan 2023 to 2030. Thank you so much, Ms. Saima. Honorable Defense Minister Khaja Asif Saab, Secretary Saab, Additional Secretary Saab, Dr. Sardar Muazzam, and respected colleagues, government officials, donor agencies, media, industry, and all other stakeholders. Thank you so much. So, as the stage has been set for the presentation and briefing on this National Energy Efficiency and Conservation Action Plan by Secretary Saab, and as well as very aptly, explained by Defense Minister Saab, that, the policies and action plans, if they are mere documents, they cannot, give us results at the implementation level. It's the commitment, it's the will, and as well as the doable mechanisms or simple mechanisms, if they're defined, if they're, the scope is defined, the responsibilities are fixed, key performance indicators are fixed, and as well as the actions which are, selected, which can be done, which are a low hanging fruit. So with this, background, we have tried to develop this document at a national level with the input of all the stakeholders. And today's presentation, I would like to share some highlight on the global acknowledgement on energy efficiency and conservation activities and initiatives that NEECA has taken over the past 3 years. Then a little bit, direction towards the NEC policy, its goals, the priority sectors it sets, and as well as background to NEC action plan development, the priority action areas across 6 categories. And then, obviously, I would also like to highlight that you must, register yourself at slido.com. The QR code is on your table also, and you can also scan from there. And please give your feedback on a couple of questions over there. And maybe then after the sessions, we can have a feedback. Next, please. So as you can see from this, this is, a World Bank's SMAP program's rating that has been ongoing since 2019 regularly. So over 11 areas of indicators of energy efficiency for any country around the world, for 136 countries. So as you can see, in year 2019, Pakistan's score was 28 average score out of these 11 indicators. And year 2021, we have improved by 8 scores. And I must highlight that the global average score in 2021 is 48 for 136 countries. And I must say that we are on the right track. I think these indicators reflect that we are on the right track. The institutionalization phase is almost complete. And now the stage is set for implementation. So as previously my colleagues have informed that NEC policy has been approved by the cabinet in April this year. The vision of the policy is to create a culture of conservation and efficient use of energy resources in the country. It's something which is very abstract, which is, what we want to achieve, because we believe that, the behavior is something which is, crucial in terms of implementation of the action plans. Either they are with the end users or industry, or even with the, the regulators and coordinating agencies.
So the goal is 9 million tons of oil equivalent savings that we want to achieve. And with that, we will achieve a target of 35 million tons of CO2 emissions and annual benefit of $6.4 billion monetary benefit from 2030 onwards. The policy has prioritized 5 sectors: energy sector, transport, building, industry, and agriculture. And as you can see, the savings are there. Along with that, we have also measured and we want to highlight also the climate mitigation side of this policy of energy efficiency and conservation, where the CO2 emission reductions are also given. So coming back to the National Action Plan on Energy Efficiency, on 20th of April, the Cabinet Committee on Energy has directed NEECA to prepare National Action Plan for policy implementation. This plan, as Secretary Saab has also highlighted in his welcome address, outlines 29 priority action areas with defined goals, intervention, KPIs, and timelines for federal and provincial stakeholders, as well as for industry and private sector. There are 109 sub-action areas, and on top of that, there are 7 action areas that have been added, which are cross-cutting. So total 116. The action plan also draws mechanism for coordination and monitoring of implementation at the provincial level. This has also been focused in the document. An investment prospectus has also been devised because there is 8 billion investment potential that we require, for the implementation of this action plan. And the plan was also circulated among national stakeholders at federal and provincial and private sector. And the comments are being sought at that moment. And along with that, I must say that, we are also going for consultations. And this is also a national stakeholder consultation that is, driving from this agenda. This is a little summary of the action areas, priority action areas. On the regulatory side, we have divided it into 3 pillars: regulatory, capacity, and advocacy. And over there on the y-axis is the sectors: industry, building, transport, agriculture, industry, and cross-cutting. From cross-sectoral, we mean that, awareness, education, and advocacy in terms of, integration of energy efficiency and conservation in the curriculum, in going for Ulama declaration, developing various programs, school awareness programs, and things like that. And along with that, the cross-sectoral is also financing. So fiscal and financial incentives such as exemptions and import subsidies and things like that. So as you can see, there are total 29 action areas, and for 109 sub-action areas, there are, these are divided as such that in regulatory, in industry, there are 6, and under the capacity pillar, there are 15, and under advocacy, there are 2. In building, there are 13, and 3 in capacity and 3 in advocacy. Similarly, as you can see that cross-sectoral initiatives are 30, which reflect that this action plan is very much balanced in terms of the regulatory provisions and as well as incentivizing the market to develop a market business and offer a business enabling framework. So with industrial sector, there are 6 action areas: regulatory 3 and capacity 3. This is the cost-benefit analysis that we have done for each priority action area. As you can see, that for the implementation of maps for industrial motors, there are the annual impact is $117 million saving in terms of kilowatt hours, a million units. Tune-up of gas and coal-based industrial boilers, tune-up of gas-based industrial furnaces, and tune-up of HFO-based captive gensets. So the total annual impact is $490 million in the industry sector with the implementation of this action plan. This is the detailed framework that we have, implementation framework that we have developed for your understanding. As you can see, this plan clearly outlines the responsibility on the lead agency who will be leading the particular action area, and then the support agencies at the provincial and at the federal level, and target date also, and the responsibility on either the federal government or provincial.
areas, we have also tried to, focus on achieving, public-private partnerships. There are action areas for public-private partners. Okay, we are here. So on the capacity side, there's a tune-up and retrofitting of gas and coal-based industrial boilers, furnaces, and kilns. Similarly, there are tune-up of retrofit of gas and furnace oil-based captive gensets. This is also has been included in the priority action areas. For the building sector, 8 action areas. And savings are in front of you. As you can see, the minimum energy performance standards, compliance and implementation is one of the major core area, and labeling regime is the core area for national energy efficiency and conservation action plans implementation in the building sector. As you can see, there are saving potential of $567 million per annum. Again, the compliance of minimum energy performance standards and labeling regime for electric appliances and equipment is the federal responsibility. NEECA will be the lead agency on that, and support agency will be PDAs, relevant industrial associations, PSQCA, Ministry of Science and Technology, in the PCSIR, PNAC, Ministry of Industries and Production. Many of these, regulations and the minimum energy performance standards have been developed or in the finalization stage. And we are also presenting the session 3 regulations for electric appliances and as well as EV charging infrastructure for consultation. Similarly, the plan is also proposing mandatory energy audits, pre and post solarization initiatives in public buildings, especially at federal level. So it's a federal responsibility, and as per the ongoing initiatives of Power Division, assigned to the Power Division, we have given the lead to Power Division, and the support agency will be NEECA, PDAs, development authorities, provincial building departments for replication actually, and Ministry of Housing and Works, Ministry of Climate Change and Environmental Coordination to activate, the climate finance of side of that through carbon credits. Will be replicated in the provinces also. So PEPRA will be the lead agency on that, and the support agency will to initiate and catalyze this whole process will be the NEECA and Ministry of Science and Technology. Placement of energy managers at designated consumers of the building sector for verifiable energy management system. So NEECA Act actually provides for the designation of consumers, sectoral consumers with certain energy use thresholds. This is basically to identify these consumers and then incentivize them through various fiscal and financial technical measures to actually have an energy saving plan, energy efficiency improvement plan. So this is being done across our region also in the neighboring countries, and as well as this is being done in Europe, successfully has been done in Europe. So this is something which can have a major saving potential for Pakistan in terms of energy. Then mandatory energy audits of designated consumers in old buildings. So the existing buildings, we thought that there should be some kind of intervention for them because there are massive buildings in this country, massive amount of buildings which are energy inefficient. And to make them energy efficient, it's important that we should retrofit them and provide mechanisms which actually support the retrofitting through easy access to finance and all that. And the last one is the mandatory compliance of energy conservation building codes. Now, as previously my colleagues have also informed you that our building style has changed quite a lot. And famously, what Dr. Fiyaz Chaudhary Saab mostly says in his meetings also, that we utilize the air conditioning to actually cool the bricks of our houses. So this is something. So we have developed a very comprehensive energy conservation building code with the support of Pakistan Engineering Council and Ministry of Science and Technology. And the compliance and implementation of the ECBC requires that
the bylaws at the provincial level should be revised and should be, harmonized with this building code, and and then implemented actually. For that, extensive component has also been given towards advocacy and as well as capacity building of technicians, of masons, and stakeholders like that. So cooling action plan, this is also one of the intervention that is also in parallel ongoing with our partner agency, CLASP. And in that, specifically for fan, refrigerator, and ACs, maps are being developed. And bulk replacement of fans in government buildings is also being proposed, and low-income households, and as well as introduction of refrigerator with low GHG emission. This is a climate-oriented action, because now the HFCs are being phased down by 2030 across this is the pledge that we have made at a climate conventions. In transport sector, one of a major energy intensive sector of the Pakistan's economy. Here, as you can see, almost 70% of the fuel import bill is the energy cost that we pay in our import bill. So vehicle tune-up centers is being proposed to be established. Along with that, fuel economy standards for car, buses, and trucks. In Pakistan, there are no fuel economy standards. Tractor tune-up centers, and shifting to EV electric vehicles, 4% at the rate of 4% per annum. Two-wheelers, three-wheelers initially, and then that will be implemented also for the four-wheelers. The total annual impact has been estimated at $1.6 billion. On the regulatory side, number one is the development of codes and standards associated with EV supply equipment, especially the charging equipment. And that responsibility has also been fixed and then been proposed, and target date is 2025 for implementation. Similarly, enforcement and development of national fuel economy standards and vehicle fleet retirement age. The next one is the mandatory annual tune-up certification for internal combustion engines, which are on road for 5 years or the more. On the agriculture side, again, as Honorable Federal Minister for Defense has also said, nighttime irrigation has to be promoted. If we do that, only through that, we can save, 275 million liter of diesel. We don't need to pump, the water from the ground. And the annual impact is $276 million alone for only this behavioral change, action. And use of multi-purpose tractors for rice cultivation, $29 million. Diesel tubal tune-up program, 122, and conservation of existing water, conversion of existing water pumping to solar water pumping can save us $110 million. The total is $545 million. So the actions include, energy efficiency standards for electric-based water pumps and tube wells, then implementation of energy efficiency improvement programs for diesel engine tube wells that are quite dominant, especially in Punjab and Sindh, and establishment of tractor tune-up centers. This is also one of the major area where there are almost 60% of the tractor strength in the country is 10 years or older. In the energy sector, there are total, annual impact is $3.1 billion. I'm running short on time, so I think I need to hurry on that. So, and in terms of capacity, establishment of energy efficiency and conservation cells at discos and gas utilities for system improvement is being proposed. And under that, there are almost 6 specific tasks that have been identified. Development and implementation of medium and long-term summer and winter load management programs, especially at power and gas sector entities, integrated with the energy efficiency and conservation drives and, awareness campaigns and behavior change campaigns that we want to deliver. Basic and biannual load profile assessment of domestic, commercial, industrial, electric, and gas consumers. Biannual heat rate assessment of GENCOs and IPPs.
to ensure performance spurs, and the lead will be obviously with Ministry of Energy and supported by NEPRA and NEECA. On the advocacy side, I must say that there is a study that we have done, pre-feasibility study for hydrogen, green hydrogen in the country. A total of 13 solutions were proposed for generation of hydrogen and its utilization in the country. Out of those 13, two pilot projects have been proposed in that pre-feasibility to go for a feasibility. One is at Ghazi Brotha, and the other one is at Qaid Solar Power, and then placed at a canal coming out of the Panja Dahar works. So this is one area where the world is moving, and we have a lot of potential to mix our hydrogen in our existing pipelines at the rate of 6 to 7% with our SNGPL and SSGC supply lane distribution network. In the cross-sectoral areas, action areas, the number one is the incentives and financing for energy efficiency and conservation across 5 priority sectors of the economy. Under this action area, there are almost 11 tasks, specific tasks, which include, among others, the exemption and concessions that with the techno-economic analysis and with the consultation with the Ministry of Finance can be extended to various areas of energy efficiency and conservation sectoral areas. Similarly, establishment of National Energy Efficiency Registry System and Energy Information House is one of the area where basically this is a data-driven approach that we want to utilize. And this area will this action area, if implemented, will also develop the capacity of the consumers at industry level, as well as at the commercial or residential level, in terms of reporting, in terms of transparency, in terms of taking timely decisions on the regulator side or government side. Institutional capacity building of provincial governments and setting up the coordination mechanisms is another area. This is specifically a provincial action area where the support will be extended to provincial designated agencies and the line departments, especially agriculture and transport, to build their capacity on energy efficiency and conservation and the action that they have to deliver. And lastly, but not the least, awareness, advocacy, and capacity building. This area includes almost 19 subtasks, and among others, as I have highlighted, is the integration of the energy efficiency and conservation in the single national curriculum, development of energy efficiency, energy audits 101 for the engineering universities. That is one thing. Then development of manuals and training manuals for masons, for technicians, for the implementation of energy conservation building codes, as well as the digital 360-degree campaign utilizing the social media to have a behavior change. And it's a long-term strategy, which is 3 to 5 year strategy, where we are looking at a national citizen or a citizen of our nation, how it transforms or evolves over a period of time from being just an inactive strata of the society to being a change agent and advocate for the energy efficiency and conservation. With this, I would like to thank you, and the floor is open for the feedback. And I would request our IT team to please, if they can reflect the the results of the feedback that has been given. So 100% for energy efficiency and conservation is the least effective, least cost pathway. So energy sector is a most priority, the crowd thinks, and then building sector, and industry and transport and agriculture in this sequence.
we are very much interested to have feedback from the audience who have said that it's ambitious and somewhat ambitious. I think we can have good guidance from these stakeholders. Next, please. So, fuel import bill is the top priority at the co-benefit level of energy efficiency and conservation and improved energy access, and then improved industrial productivity, enhanced export competitiveness. Again, 53% and 40% of the population think that it's really important to have awareness and advocacy regime for the energy efficiency and conservation. Yeah, this is one of the important things, because the implementation of energy efficiency and conservation at the end of the day lies with the provincial governments and provincial entities, and NEECA is always striving to develop provincial capacities for the implementation. %83 of the participants are saying that draft NEC action plan is balanced in terms of regulatory versus incentive-driven ENC actions. Fiscal and financial incentives are the priority or most important enabling action area that has been identified, and then coupling of renewable energy with the energy efficiency. And on 3 is the climate finance for energy efficiency. Next, please. I think this is it. This is it. And with this, I would like to thank you all. And I must say that we have also, posted the National Energy Efficiency and Conservation Action Plan on our website, www.neeca.gov.pk. We have also, you can also find NEC policy over there, and as well as various other, informative material that is open for the comments, specific comments. For specific comments, we have sent our drafts to all the stakeholders who are present over there. Thank you. This is not on. Thank you so much, sir. Indeed, it was a very comprehensive presentation. Dear audience, as many of you are aware, a pivotal role in driving energy efficiency and conservation initiatives nationally. Today, we are to announce another significant milestone that NEECA has accomplished, the approval of new bill. For this, I would like to invite Mr. Zikanullah, Director, Residential and Building, National Energy Efficiency and Conservation Authority, to come on stage and present the presentation. And I am happy to announce that this session will be chaired by Muhammad Irshad Khan, Project Manager, GIZ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, everyone, respectable guests, chief guests, and my colleagues. During this presentation, you can use slido.com and all the questions. So after the presentation, we can have a look into the option of the opinion.
तो अभी तक जितनी भी बात हुई है वो सारी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, बिल्डिंग एस्पेक्ट्स एंड let's start with the energy conservation building code actual. So ये ड्रॉन होगा, ये ड्रॉन होगा। ऑफ दिस भी नहीं हो सकता ऑफिस। So let's start with the brief introduction of building code. So what is building code? Building code is a set of guidelines for a specific construction of building to create certain standards. This building code of Pakistan is a larger umbrella which include rainwater harvesting code, building design code, seismic code. One of the code is energy conservation building code. Oh, yeah. So these are the outline of my presentation. First of all, introduction of energy conservation building code, gap analysis, comparative analysis, and then energy efficiency technique and strategies, and outline of energy conservation building code. Energy conservation building code is one of the code of energy building code of Pakistan. एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड की असल में जरूरत क्यों पेश आती है? हमारी अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बताया, सेक्रेटरी साहब ने भी इन्फॉर्म किया कि ओवरऑल जो बिल्डिंग में एनर्जी डिमांड है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंक्रीज हो रही है। अभी जैसे ख्वाजा साहब ने फरमाया था कि 18,000 मेगावाट जो है वो कूलिंग लोड है जस्ट बिल्डिंग में। वो कूलिंग लोड क्यों आया है बिल्डिंग में? क्योंकि हमारी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन एज पर स्टैंडर्ड्स नहीं है। बिल्डिंग कोड में की जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट की अगर प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास दो कमेटीज थी। फर्स्ट कमेटी इज टेक्निकल कमेटी व्हिच कंप्राइज ऑफ ऑल द गवर्नमेंट स्टेकहोल्डर्स। इट इज अ 35 मेंबर कमेटी इंक्लूडिंग अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग AJK एंड JB। इसमें सारे गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स थे, इन्होंने काफी इनपुट्स दी अपनी चैप्टर राइटिंग में, चैप्टर रिफ्रेशिंग में, रिवीजन में। So I am very thankful to all the committee members, technical committee members. Secondly, we have our advisory committee comprised of all the private stakeholders. उसमें हमारे पास बिल्डिंग से टॉप सिटी से, उसके बाद आबाद से जो लोग थे जिन्होंने रियल टाइम प्रॉब्लम जो थे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड्स वो हमें रेज किए और उन्हीं रियल टाइम इश्यूज को हमने इनकॉर्पोरेट किया इन डेवलपमेंट होलिस्टिक बिल्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। प्रोसेस में स्टेज 1 में हमारे पास थे, हमने जो कमेटीज बनाई थी, उन्होंने 2011 का जो एनर्जी प्रोविजन था दैट वाज डेवलप्ड बाय पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उसको रिव्यू किया और उसमें एनालिसिस किया कि व्हाट न्यू स्ट्रेटजीज वी कैन इनकॉर्पोरेट इन न्यू बिल्डिंग कोड। सो फर्स्ट मीटिंग में हमने गैप एनालिसिस किया था, सेकंड मीटिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निक्स एंड चैप्टर्स ऑफ न्यू बिल्डिंग कोड, और थर्ड मीटिंग में फिर हमने उसका जीरो ड्राफ्ट है उसको थोरोली रिव्यू किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द कमेटी मेंबर्स, और फिर हमने वो जीरो ड्राफ्ट फाइनलाइज करके कमेटी मेंबर से शेयर किया था। पैरेलल में हमने एडवाइजरी कमेटी की 2 मीटिंग्स की थी। फर्स्ट मीटिंग में हमने उस रियल टाइम जो इश्यूज थे इन इंप्लीमेंटिंग द डिफरेंट एनर्जी कोड्स, और उसके बाद सेकंड मीटिंग में हमने उससे भी रिव्यू किया था एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। उसको फिर नेक्स्ट नीका कमेटी ने 21 मार्च को और नीका बोर्ड ने 24 मार्च को अप्रूव कर दिया। सो डॉक्यूमेंट व्हिच इज रेडी फॉर द स्टेक होल्डर्स वो नीका बोर्ड से अप्रूव्ड है और ओवरऑल उसको रिव्यू भी कर किया जा चुका है और स्टेक होल्डर्स के जो कमेंट्स थे उनको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। So this is overall introduction of energy conservation building code. अभी जैसे फेडरल मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया था कि हमारा जो पीक लोड होता है, पीक लोड एक्चुअली 30,000 मेगावाट है, उसमें से 18,000 मेगावाट है वो जस्ट कूलिंग लोड है जो कि बिल्डिंग में डिमांड्स,
उसमें फैन का लोड भी इंक्लूड है और एसी लोड इंक्लूड है, तो 18,000 इज अ ह्यूज अमाउंट. So if you look into the energy demand from 2017 to 2022, the overall average peak load, cooling load in the buildings and the commuter load is increasing gradually. This is a distribution of the energy demand in different sectors. Surprisingly, we have 53% energy demand in domestic sector and only 11%, 28% energy demand in the industrial sector. जबकि बाकी वर्ल्ड में ये ऑपोजिट होता है, इंडस्ट्री सेक्टर में डिमांड ज्यादा होती है और डोमेस्टिक सेक्टर में डिमांड कम होती है, because the industry sector is playing a vital role in improving the GDP of the country. But here we have 53% in the domestic. If you add up 53% in the domestic building and 8% in the commercial building, then we will get with 61% of the total load is consumed in the building sectors. This is again a showcase of energy demand during the different months. If you look into this graph, the load in the winter season is very less, and as compared to the energy demand in the summer season. This is because we build inefficient buildings, poor design hota hai. Actually जो practice चल रही है market में वो ये चल रही है कि हमारे जो ड्राफ्टमैन होते हैं जिनको टेवटा वगैरह ने एक 6 month का या 1 year का कोर्स करवाया था ऑटोकैड का, वो वही अपने आप को अज्यूम करते हैं that we are an architect and we are a civil engineer, we can design every building. तो वो जब आर्किटेक्ट उस बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे तो दे डोंट हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्डिंग एनवेलप, बिल्डिंग इंसुलेशन. तो ऐसे लोग जब मार्केट में डिजाइन करेंगे विद लो रेट तो बिल्डिंग में एनर्जी डिमांड इंक्रीज करेगी. So we have to encourage the architects and engineers to design our building to reduce this energy demand. तो अगर हम इसको वैसे ही कंपेयर करें इन टर्म ऑफ इकोनॉमी, तो कूलिंग लोड को मीट करने के लिए अगर आप 2000 मेगावाट जो के इलेक्ट्रिक का उसको भी ऐड करें 18,000 मेगावाट, तो ये टोटल 20,000 मेगावाट बनता है. टू फुलफिल दिस डिमांड we need $92 billion. This is a huge amount which can drain our economy. So what are the problematic areas that increase the energy demand in the building sector? First of all is the poor design of building envelope. उसको मैंने बता दिया वो क्यों poor design होता है, क्योंकि हम architects को और engineers को prefer नहीं करते. डिजाइन फेज में हम थोड़ा सा सेविंग कर लेते हैं. नो डाउट जो आर्किटेक्ट्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, उनकी पर स्क्वायर फीट डिजाइन कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ये जो लोकल जो मैंने बताया आपको मैट्रिक पास या FA पास जो ड्राफ्टमैन है उनकी थोड़ी सी कॉस्ट कम होती है. तो एट द डिजाइन एंड प्लानिंग फेज वो सेव सम मनी. और वो जो पुअर डिजाइन होता है इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग एनवेलप, बिल्डिंग इंसुलेशन और बिल्डिंग ओरिएंटेशन, और इसके साथ जो आपके अप्लायंसेस वगैरह हैं उनका HVAC का लोड है, MEP डिजाइन है, इनमें इनके डिजाइन में जब आप प्रोफेशनल इंजीनियर्स को प्रेफर नहीं करेंगे तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बिल्डिंग में. तो जो प्रॉब्लम इंक्रीज आ रही हैं, राइजेस हो रही हैं, उसमें जो बिल्डिंग जो लोड कूलिंग लोड है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है. उसके सबसे बड़ी रीजन है बिल्डिंग. तो ओवरऑल हमें करना ये चाहिए कि पहले आप बिल्डिंग है उसको एक एनवेलप में क्लोज करें. एनवेलप में क्लोज करने के बाद उसका प्रॉपर डिजाइन होता है एनवेलप का. नेक्स्ट आप उसमें ओपनिंग दें. ओपनिंग मीन इन टर्म ऑफ विंडोज, इन टर्म ऑफ डोर्स, इन टर्म ऑफ सनलाइट्स. और अब उसमें भी वॉल विंडो रेशियो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन एंड डिफरेंट जोन्स. सो पहले आपको बिल्डिंग एनवेलप डिजाइन करना है, फिर उस एनवेलप के अंदर आपने ओपनिंग्स देनी है, दैट इज विंडोज एंड डोर्स एंड अदर मटेरियल्स. उसके बाद फिर आपने उसकी बिल्डिंग की इंसुलेशन करनी, सो दैट देयर मस्ट बी अ टेम्परेचर डिफरेंस. कि बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से डिफरेंस होना चाहिए. हमारे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है अनफॉर्चुनेटली उसमें जो हमारे ब्रिक मैसनरी यूज की जाती है विदाउट एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन, तो सारा दिन जब उस ब्रिक मैसनरी के ऊपर सन हीट आएगी तो वो ऑब्जॉर्ब करेगी, और जब शाम को वो क्या जब सन सेट हो रहा होता है फिर वही हीट जो है वो अंदर डेसिपेट होती है बिल्डिंग के अंदर, तो हमें शाम को भी अंदर गर्मी लगती है. तो उस टेम्परेचर को एक कूलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, एक हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम जो AC वगैरह यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी एनर्जी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रही है. So the biggest problem is the building insulation and poor design of building envelope.
एक उसमें और एरिया भी है, जैसे ख्वाजा साहब ने फरमाया था फेडरल मिनिस्टर ने, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको वेस्ट कर देते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में सनलाइट है, सनलाइट की हार्वेस्टिंग हो सकती है थ्रू सनलाइट, जो आप रूफ लाइट देते हैं उससे। और उसके अलावा हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अभी उन्होंने भी हाईलाइट किया था कि जितना पानी आता है, बारिश होती है, अभी भी बारिश हो रही है, सारा पानी हम सिवरेज लाइन में डाल देते हैं, और एक कुदरत का हमारी तरफ से हमें गिफ्ट है, और वो हम ऐसे ही जाया कर देते हैं। इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस पे उन्होंने बोर होल बनाए होते हैं, जिससे आप जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज होता है। लेकिन हमारे केस में हम सिर्फ पानी जमीन से निकाल रहे हैं, वापस कुछ नहीं दे रहे। तो यही वजह है कि जो बिगेस्ट सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उन सिटीज में जो वाटर टेबल है वो डाउन जा रहा है। और इससे अब एक ज्यादा डाउन वाटर से, जो वाटर टेबल से जब आप वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस पर आपके हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। सो वी नीड टू हार्वेस्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, इंक्लूडिंग सनलाइट, सन हीट, and other resources like use of solar panel, rainwater harvestings. अब ये जो problems आए हैं, इनको हमने cater कैसे करना है? First of all, I must nominate you must use or prefer the architects and professional engineer to design your building that must be energy efficient building. Secondly, we have to limit the size of the cities. जैसे लाहौर को खींच के बड़ा करते गए हैं। पहले लाहौर छोटा होता था, अब उसको खींच के इतना बड़ा कर दिया कि लाहौर के एक कॉर्नर से अगर दूसरे कॉर्नर में जाना हो तो 5-7 घंटे का वैसे ट्रैवल है, और 5 घंटे में इंसान लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच जाता है, और लाहौर के अंदर मूव करना तो 5-6 घंटे लग जाते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद को भी काफी खींचा जा रहा है। तो अब हमने सिटीज का साइज है उसको लिमिट करना, that will improve the energy efficiency of the cities. नंबर सेकंड, हमारे मुल्क में जो कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं वो भी 3 स्टोरी तक लिमिट कर दी गई हैं। जैसे CDA के बायलाज हैं, जो कमर्शियल जितने भी बिल्डिंग्स हैं इस्लामाबाद में, वो 3 स्टोरी से ज्यादा उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, जबकि पूरी वर्ल्ड में स्काई स्क्रैपर बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं। वर्टिकल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट जितनी हम इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा वो लैंड का एफिशिएंट यूज नहीं होगा। तो बिल्डिंग एनर्जी कोड में हमने ये प्रोविजन दी है कि जो डोमेस्टिक बिल्डिंग्स हैं उसको एटलीस्ट 5 स्टोरी तक अलाउ किया जाए, 1 स्टोरी अप टू 5 स्टोरी। और उसके बाद जो कमर्शियल बिल्डिंग है उनको एटलीस्ट 10 स्टोरी तक अलाउ किया जाए with the 2 basement floor dedicated for the parking, जिससे इस्लामाबाद में पार्किंग के इश्यूज जो हैं वो भी सोल्व हो जाएंगे। So we prefer vertical development and urbanization with the specific size of the cities. ये एक मेजर एस्पेक्ट है जो हमारे पहले हमारे कन्वेंशनल बिल्डिंग्स थी, जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी, जिसमें अगर मैं लाहौर की बात करूं तो शाही किला, बादशाह मस्जिद अक्सर विजिट होता है उसका, उसमें कोई फैन नहीं है, कोई AC नहीं है, लेकिन आप वहां पर कंफर्टेबल फील करते हैं। इंडोर एयर क्वालिटी बहुत इंप्रूव्ड है, वेंटिलेशन बहुत इंप्रूव्ड है। तो हमें अंदर कितनी ज्यादा वो हीट और कूलिंग लोड, हीटिंग लोड वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होता उधर। रीजन बिहाइंड दिस इज द स्टोरी हाइट। प्रीवियसली जो स्टोरी हाइट होती थी दैट इज 14 फीट 15 फीट। नेचुरली होता ये है कि जो आपकी वार्म एयर है वो ट्रैप्ड होती है अबव 7 फीट, और एवरेज जो हाइट है पाकिस्तान में वो 5 फीट 8 इंच है। तो अगर आपकी स्टोरी हाइट ओवरऑल 14 फीट होगी तो अबव 7 फीट हाइट उसमें सारी वार्म एयर जो वो ट्रैप्ड होती है। तो नीचे हमें हमारी बॉडी डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट नहीं होगी उस वार्म एयर के साथ, तो हमें वो AC की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हुआ ये है कि हमने कुछ पैसे सेव करने के लिए इकोनॉमिक रीजन की वजह से हमने स्टोरी हाइट को रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 14 फीट टू 7 फीट, और सॉरी 10 फीट और 11 फीट। अब जब वो 7 फीट वाला फैक्टर इसमें ऐड करेंगे तो सिर्फ ग्राउंड लेवल से वो 3 फीट या 2 फीट का मार्जिन बचेगा। तो वो जो वार्म एयर है वो डायरेक्टली इफेक्ट ओवर बॉडी, और उसको कैटर करने के लिए हम फिर वो फैन यूज करते हैं और फिर AC वगैरह यूज करते हैं। सो विद द लार्जर स्टोरी हाइट we can reduce our energy demand and the cooling load. Secondly, जब आप स्मॉलर स्टोरी हाइट होगी, लेसर स्टोरी हाइट होगी, और आपके वेंटिलेटर प्रॉपर नहीं होंगे, तो उससे ये होता है कि जितनी भी हीट होती है वो सारी फर्स्ट फ्लोर पे जाके ट्रैप हो जाती है। तो मेजोरिटी केस में अगर आपने नोट किया हो तो फर्स्ट फ्लोर का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ज्यादा आता है, एनर्जी डिमांड ज्यादा होती है कूलिंग लोड की वजह से, और ग्राउंड फ्लोर की एनर्जी डिमांड कम होती है। वो एक अलग इशू है और शेडिंग वजह से भी। लेकिन ये भी एक इशू है कि हमारी स्टोरी हाइट लेसर है, और नंबर सेकंड हमने प्रॉपर वेंटिलेटर प्रोवाइड नहीं किए होते, जिसकी वजह से जो फर्स्ट फ्लोर है वो ज्यादा वार्मर होता है एज कम्पेयर टू ग्राउंड फ्लोर।
अगर हम एक प्रॉपर वेज में हम उनको वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे तो जितनी भी वार्म एयर है जो उसके ये येलो कलर से शो हो रही, ये सारी वार्म एयर वहां से वेंटिलेट हो जाएगी, तो ओवरऑल आपकी एनर्जी डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू कूलिंग लोड. Roof area with is directly in contact with the sun heat. मेजर जो चंक है सन हीट का वो रूफ से ही पेनिट्रेट होता है इनसाइड द बिल्डिंग. सो रूफ में अगर आप उसको सिंपली जस्ट जो ब्रिक टाइल्स होती है उससे यूज कर लेंगे, या जो हमारी कन्वेंशनल चिप्स होती है जिसमें आप सीमेंट सैंड और जीरो साइज का जो एग्रीगेट होता है वो यूज करते हैं, तो उससे वो हीट जो है रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, तो वो सारी हीट एब्जॉर्ब होगी. एब्जॉर्ब होने के बाद पेनिट्रेट इनटू योर बिल्डिंग. सो यू नीड हायर एनर्जी डिमांड, हायर एनर्जी कूलिंग लोड to cater that warm and cold air. So if we use a reflecting paint or jumbo lawn or अब एक नई टेक्निक नया मटेरियल इन्वेंट हुआ है that is called solar chips. तो वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं 40%, 60% up to 80%. तो जब 80% हीट आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जस्ट 20% हीट आप जो रूफ है वो उसको एब्जॉर्ब करेगी और पेनिट्रेट करेगी इनटू द बिल्डिंग, तो आपका ओवरऑल जो एनर्जी डिमांड है, कूलिंग लोड है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा. So this is one another aspect. आप वर्टिकल गार्डनिंग भी कर सकते हैं to save your wall from the solar heat and to save your roof from the solar heat. So वर्टिकल गार्डनिंग थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव सा सोल्यूशन है, लेकिन इसमें इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी पॉजिटिव है, और प्लस यहाँ से जो आपकी ओवरऑल सन हीट है वो भी पेनिट्रेट नहीं होगी आपके बिल्डिंग में, तो ओवरऑल बिल्डिंग लोड जो है एनर्जी डिमांड वो रिड्यूस की जा सकती है. This is one of the basic aspect that is building orientation. अब हमारे करंट प्रैक्टिस में हो ये रहा है कि जो हमारी विंडोज होती हैं ईस्ट वेस्ट साइड हो या नॉर्थ साउथ साइड हो, सब साइड में सब ओरिएंटेशन में विंडोज के ओरिएंटेशन में हमारा जो शेड होता है वो विंडो के ऊपर 1 या 1.5 फीट हाइट एक गैप छोड़ के उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल शेड डाल दिया जाता है. ये हॉरिजॉन्टल शेड इज इफेक्टिव इन नॉर्थ एंड साउथ साइड, नॉट इन द ईस्ट एंड वेस्ट साइड. ईस्ट वेस्ट साइड के लिए आपको विंडो के लिए वर्टिकल शेड रिक्वायर्ड होता है. विंडो के आगे हम लूवर्स लगा देते हैं और वो ये विंडो है, विंडो के आगे आपका वर्टिकल शेड जो होगा वो आपका सन हीट जो है उसको वो कैटर करेगा. यहाँ से सिर्फ सनलाइट अंदर पेनिट्रेट होगी, सन हीट अंदर पेनिट्रेट नहीं होगी, क्योंकि सूरज बिल्कुल सामने है. अब इधर से आप देखें ये वाला जो सन का पाथ है, सूरज सामने है, बट आप जो विंडो है वहां से सारी हीट अंदर पेनिट्रेट हो रही है. सो इफ वी डेवलप कंस्ट्रक्ट अ वर्टिकल शेड in front of our windows which is in direction of east and west, तो वो सन की सिर्फ लाइट अंदर पेनिट्रेट होगी, सन की हीट अंदर पेनिट्रेट नहीं होगी. तो एक मेजर कंपोनेंट है वो हमारी वॉल के बाद विंडोज हैं जहां से हीट अंदर पेनिट्रेट होती है और कूलिंग लोड इंक्रीज होता है. तो ईस्ट वेस्ट साइड अगर आपकी बिल्डिंग है तो आपको यू नीड टू डेवलप अ वर्टिकल शेडिंग, और अगर साउथ और नॉर्थ साइड है तो फिर आप हॉरिजॉन्टल शेड प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी प्रैक्टिस चल रही है. So these are different design aspects that reduce overall cooling load of your building in commercial as well as in the residential building. So next is a gap analysis. But PEC ने 2011 में कोड डेवलप किया था, that is energy provision, building code of Pakistan energy provision. उसमें कुछ गैप्स थे जो हमने 2011 में PEC और नीका की एक ज्वाइंट एफर्ट से, टेक्निकल कमेटी और एडवाइजरी कमेटी के एक एफर्ट से ये कोड डेवलप किया, जिसमें जितनी भी लेटेस्ट जितनी टेक्निक्स हैं बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी के लिए वो सबको हमने इनमें काउंटर किया. So these are the major aspect that were missing in 2011 code. Specifically, energy efficient appliances, building insulation, building envelope design, building orientation, daylight harvesting, rainwater harvesting system, and water reuse system in the building. उसके बाद जो 2011 वाला कोड है that is specifically used for the construction of new building. So we have designed a chapter for retrofitting of existing building to convert that conventional building into energy efficient building. So existing building को भी हमने इसमें cover किया इस code में, और जो new construction है उसको भी हम इस code में cover किए. So these are the gaps which were left in the 2011 code which have need to be incorporated in new energy conservation building code. तो अब भी क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम एक जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है उसको अडॉप्ट क्यों करें. अब आपका एक घर अगर बन रहा है एक स्पेसिफिक अमाउंट में, आपको कहा जाए कि उस पर एक एक्स्ट्रा आप इन्वेस्ट करें, तो क्वेश्चन राइज होगा कि व्हाई वो इन्वेस्ट एक्स्ट्रा ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग.
तो उसका कोई बेनिफिट आपको पता होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट होगी, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, कितना प्रॉफिट पीरियड कितना होगा मेरा, ठीक है, और उसमें आपको कौन कौन सी बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स होंगे जो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ भी आपको अवेलेबल होंगे। So, ये कैलकुलेशन की है जिसमें हमने एक 10,000 स्क्वायर फीट एरिया यूज किया जो कि सिंगल स्टोरी बनता है, उस पे कॉस्ट कैलकुलेशन है मटेरियल की प्लस लेबर की, और जो एडिशनल कॉस्ट आती है टू कन्वर्ट दैट डिजाइन और दैट कंस्ट्रक्शन इनटू एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन, तो वो इस कुछ एनालिसिस किया और उसमें हमने ROI बताया कितना कब आएगा, और उसके बाद उसका जो पीरियड होगा प्रॉफिट पीरियड वो कितना होता है। सो करंटली जो इस टाइम मार्केट में एवरेज रेट है वो 3500 टू 4,000 पर स्क्वायर फीट है, इंक्लूडिंग लेबर एंड मटेरियल। सो उसमें से 75% जो कॉस्ट होती है वो फॉर मटेरियल होती है, और बाकी 25% कॉस्ट फॉर लेबर होती है। सो जो एनर्जी एफिशिएंट, अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड यूज करते हैं या उस बिल्डिंग को कन्वर्ट करते हैं इनटू एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग फ्रॉम द कन्वेंशनल बिल्डिंग, तो 15% टू 20% एडिशनल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है इन द टर्म ऑफ मटेरियल, जो जिसमें आपका जो ग्लास होते हैं विंडोज के वो चेंज हो जाते हैं, विंडोज फ्रेम चेंज होता है, डोर चेंज हो जाते हैं, वॉल मटेरियल चेंज होता है, बिल्डिंग इंसुलेशन और रूफ इंसुलेशन, ये कुछ मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपने कवर करना है उस न्यू कंस्ट्रक्शन में। तो उसको अगर आप कैटर करें तो ओवरऑल 15 टू 20% कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती है फॉर सिंगल स्टोरी। तो उसमें आपका जो पे बैक पीरियड है बिल्डिंग में, अगर आप ओवरऑल उसको एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन करते हैं तो 30 टू 40% पोटेंशियल है उसमें एनर्जी सेविंग का। तो उसके अगर कैलकुलेशन करें तो आपका 5 ईयर टू 7 ईयर पे बैक पीरियड है, जो भी आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की है इन टर्म ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। जो ओवरऑल मटेरियल है जो 30 लाख बन रहा है इसमें, वो तो आपने वैसे भी लगाना है, कन्वेंशनल बिल्डिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन करें या आप एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करें, दोनों केस में जो आपका बेस मटेरियल है वो तो उतना ही रहना है। एक्स्ट्रा आपने जो पे किया है वो ये 5 लाख है, 0.5 मिलियन। तो ये एक्स्ट्रा जो पेमेंट आपने की है ये की है टू कन्वर्ट दैट कन्वेंशनल बिल्डिंग इनटू एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। उससे ये होगा कि आपका जो बिल्डिंग है पोटेंशियल है अप टू 40% टू सेव द एनर्जी, वो 40% से आपका जो पे बैक पीरियड है वो 5 ईयर 6 ईयर में वो पे बैक पीरियड हो जाएगा। एवरेज लाइफ जो पाकिस्तान में बिल्डिंग्स की है वो 50-60 ईयर होती है। तो अगर हम 5.5 ईयर भी कंसीडर करें या 7 ईयर भी इवन के कंसीडर करें पे बैक पीरियड, तो बाकी 43 ईयर आपका प्रॉफिट पीरियड है, जिसमें वो बिल्डिंग आपको एनर्जी सेव करके देगी, आपका ओवरऑल आप जो इन्वायरमेंट है वो भी चेंज होगा और आपका कूलिंग और हीटिंग डिमांड जो वो भी रिड्यूस हो जाएगी। सो दीज आर द मेजर बेनिफिट जो आपको एनर्जी के अलावा भी मिल रहे हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज आपका जो यूटिलिटी बिल्स है जो मैंने अभी बताया आपको, वो भी रिड्यूस होंगे 5% अप टू 30-40%। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो भी आपके रिड्यूस होंगे ओवरऑल। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं बताया आपको 4 ईयर टू 8 ईयर वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न होगी, और उसके बाद का जो पीरियड है 52 ईयर या 56 ईयर वो आपका प्रॉफिट पीरियड है। और इसके साथ सिर्फ ये आपको एनर्जी डिमांड की भी रिड्यूस हो रही है, और नंबर सेकंड जब आप इनसाइड योर हाउस आपको एक वार्म एयर नहीं फील होगी, एक इंडोर एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो आपको ओवरऑल हेल्थ पे भी पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। वो पॉजिटिव इफेक्ट जो हेल्थ वाले वो हमने पीछे कैलकुलेट नहीं किए, ठीक है। जो इंडोर एयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और प्लस जो आपकी बिल्डिंग बाकी बिल्डिंग से डिफरेंट होती है तो ओवरऑल आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू जो वो भी इंक्रीज होती है। एक एग्जांपल है, लाहौर में एक हॉस्पिटल है एवरकेयर, वो लीड सर्टिफाइड है। लीड इज इंस्टीट्यूट, अमेरिकन बेस्ड इंस्टीट्यूट जो पूरी वर्ल्ड में एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग को रेटिंग करता है, और उसका डिफरेंट रेटिंग स्केल है। जो लोएस्ट है मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड पे दैट इज सर्टिफाइड, उसके बाद सिल्वर है, फिर गोल्ड है और प्लैटिनम सर्टिफाइड मैक्सिमम उसका रेटिंग है। वो जो हॉस्पिटल है वो गोल्ड सर्टिफाइड है फ्रॉम लीड। उन्होंने सर्टिफिकेशन से पहले जो प्रॉपर्टी वाले थे उनसे वैल्यू फाइंड की, और सर्टिफिकेशन के बाद जस्ट एक लेबल लगाने से उनके जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 30-34% इंक्रीज होगी, जस्ट एक लेबल से। सो इट मीन अगर आप एनर्जी एफिशिएंट जो बिल्डिंग है कन्वेंशनल बिल्डिंग से आपकी बिल्डिंग थोड़ी डिफरेंट होगी तो ओवरऑल आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। और लास्टली जब आप एनर्जी डिमांड रिड्यूस होगी तो प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी तो जीएचजी गैसेस वो रिड्यूस हो जाएंगी, तो ओवरऑल एनवायरनमेंट पे भी हमारा पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो होगा। और एनवायरनमेंट में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, लेकिन जो हम फेस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा। तो एक ये भी हमारा कंट्रीब्यूशन होगा थ्रू द रिडक्शन ऑफ जीएचजी गैसेस, कि हम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग अगर हम डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ओवरऑल हमारी एनर्जी डिमांड रिड्यूस हो सकती है। वो जो 18,000 मेगावाट कूलिंग लोड था वो भी अगर हम रिड्यूस करके 18 के बजाय 7, 8, 9 हज़ार पे भी ले आए
तो वो एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा जो विच विल इम्प्रूव ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब क्वेश्चन ये है, कोड बन गया, सब कुछ हो गया, अब जैसे वो फेडरल मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि इम्प्लीमेंटेशन, हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास दो अम्ब्रेलाज हैं, दो वे है। फर्स्ट वे इज हाउ टू मेक एनर्जी एफिशिएंट, एंड नंबर सेकंड हाउ टू कंजर्व द एनर्जी। एनर्जी एफिशिएंसी हम किस तरह अचीव करेंगे, ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है। इस बिल्डिंग कोड को हम जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री, हम उनके बिल्डिंग बाय लॉज को अपडेट करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग दिस एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड इनटू द बिल्डिंग बाय लॉज। तो जब एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड बिल्डिंग बाय लॉज में इंटीग्रेट होगा तो न्यू बिल्डिंग जितनी भी अप्रूवल होगी वो एज पर एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन होगा। तो एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन से जब बिल्डिंग न्यू कंस्ट्रक्ट होंगी तो ओवरऑल जो हमारा एनर्जी डिमांड है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज द बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट दिस एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, टू इंटीग्रेट दिस कोड इनटू अ बिल्डिंग बाय लॉज। So currently NEECA is working on the upgradation of building by laws. अभी करंटली हम CDA के बिल्डिंग बाय लॉज पे वर्किंग कर रहे हैं, और उसके बाद हम जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनकी बिल्डिंग बाय लॉज को ओवरऑल रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को उसमें इंटीग्रेट करेंगे, तो सो दैट और न्यू कंस्ट्रक्शन विल बी बेस्ड ऑन एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग कोड्स। सेकंड है एनर्जी जो बाकी अब सेकंड प्रॉब्लम ये आ रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग, कि जो हमारे गवर्नमेंट के भी प्राइवेट के भी जितने भी लोग हैं उनको एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग का डिजाइन नहीं आता, या उनके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स हैं, और उनकी रेसल होनी चाहिए और उनके कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे ये एक नेशनल स्टेक होल्डर प्रोग्राम है, इसी तरह अक्रॉस द कंट्री NEECA इज प्लानिंग टू डेवलप स्टेक होल्डर प्रोग्राम्स। उसमें हम जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी है उन सबको हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ऑन दिस हाउ टू डेवलप कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स एंड हाउ टू डिजाइन एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। तो उससे ये होगा कि जितने भी हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं उनको एक नो होगी कि हमने फ्यूचर में जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं उनको हमने किस तरह वेरीफाई करना है और उनको अप्रूवल देनी है। सेकंड स्टेप जो MD NEECA साहब उन्होंने एक एफर्ट की है कि PSDP के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स का एक रिविट बीम मॉडल बने, और उस बीम मॉडल का एनर्जी एनालिसिस परफॉर्म किया जाए। उस एनर्जी एनालिसिस के बाद PC1 में आपने कंपेरिजन टेबल दें जो ये शो करे कि अगर यही बिल्डिंग हमारी कन्वेंशनल तरीके से डिजाइन होती है, कन्वेंशनल तरीके से जैसे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उस टाइम उसकी एनर्जी डिमांड कितनी होनी थी, और अब जो हमने इसको एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड यूज करके एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग का डिजाइन लेकर आए हैं, तो अब बिल्डिंग डिमांड जो एनर्जी डिमांड है वो इस बिल्डिंग में कितनी है। तो अगर वो डिफरेंस 50-60% से ज्यादा होगा देन उस PSDP प्रोजेक्ट जो है बिल्डिंग का उसकी अप्रूवल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे एनर्जी एफिशिएंसी पे कन्वर्ट होंगे फ्रॉम कन्वेंशनल बिल्डिंग। सो ये दो स्टेप है जिससे हम एनर्जी एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। सेकंड है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, जैसे मैंने बताया था अभी, उसमें हमने बिल्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, उसमें एक सेक्शन रखा हुआ है दैट इज इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इनटू अ एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग थ्रू रेट्रोफिटिंग। तो रेट्रोफिटिंग का कंप्लीट चैप्टर है, और उसमें हम जो जितने भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम कन्वेंशनल टू द एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। तो उससे हमारे पास ओवरऑल एनर्जी डिमांड रिड्यूस होगी। प्लस एनर्जी कंजर्वेशन हो सकती है वो थ्रू बिहेवियर चेंज। जब तक हम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे तो एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती। बिहेवियर चेंज में कौन कौन सी चीजें हैं जो बिहेवियर चेंज में को अडॉप्ट करनी चाहिए। एनर्जी वैम्पायर हमने सुना है। एनर्जी वैम्पायर का होता है कोई ऐसी चीजें होती हैं जो हम ऐसे ही उसको ऑन छोड़ देते हैं और हमारे वो यूज में नहीं होती। जैसे मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर हमने लगाया, वो 24 घंटे चल रहा है, जब हमारी जरूरत होगी मोबाइल को लगाएंगे, चार्ज करेंगे, उसको स्विच ऑफ नहीं करेंगे, तो उससे भी आपको ओवरऑल एक इम्पैक्ट आता है जो कि आप होता छोटा सा इम्पैक्ट है, लेकिन अब आप हर घर में कोई 5-6 मोबाइल चार्जर लगे हुए हैं, आप इसको मिलियन हाउस में कन्वर्ट करें, फिर पूरी पॉपुलेशन में कन्वर्ट करें, तो एक बड़ा अमाउंट बनता है बिजली का जो हम वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो घरों में डिस्पेंसर हैं 24 आवर चलते हैं, वो भी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। बाकी अप्लायंसेस जो हैं वो भी जो हमने यूज नहीं करना, लाइट्स वगैरह हैं, AC वगैरह हैं, फैन वगैरह हैं, वो भी हमारे अगर चल रहे हैं तो वो ऑन है, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तब भी ऑन है, यूज नहीं कर रहे तब भी ऑन। तो ये एक बिल्डिंग एनर्जी वैम्पायर है जो हमारी एनर्जी को खा रहा है और हम उसको यूज भी नहीं कर रहे। तो हमने पहले बिहेवियर चेंज करना है कि जब हम मोबाइल चार्ज करने गए हैं तो मोबाइल चार्ज हो गया है तो जस्ट एक बटन को आपने ऑफ करना है, ठीक है, ये आपका अपना एक बिहेवियर है। इसी तरह डिस्पेंसर है, जब आपने यूज करना हो उसे 5-7 मिनट पहले चला लें। गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हैं सारे, जब हमने प्रिंटर यूज करना है, हमारा प्रिंटर वो जो ऑफिस आवर्स होते हैं उसमें थ्रू आउट ऑफिस आवर तो यूज नहीं होता,
आपने काम करना है, एक प्रिंट लेना, जब एक प्रिंट लेना आप उस टाइम उसको ऑन कर लें, या उस दिन के प्रिंट इकट्ठे कर लें। तो जब आपने एक ब्रेक के से पहले एक जो जितना आपने बल्क अमाउंट में प्रिंट करना है वो कर लें, फिर ब्रेक के बाद कर लें। तो वो जो 8 घंटे 9 घंटे मुसलसल प्रिंटर चलना है, हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। डिस्पेंसर चलना है, उसको भी चेंज किया जा सकता है, एसी वगैरह को भी चेंज किया जा सकता है। अब जैसे फेडरल मिनिस्टर ने फरमाया था कि हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, हमने विंडोज भी लगाई होती हैं, ग्लास भी लगा हुआ है और उसके आगे कर्टन लगे हुए। तो अगर कर्टन ही लगाने हैं तो फिर विंडो क्यों बनाई है, वॉल बना देते। फिर कर्टन से ना तो अंदर से वो हम जो सोलर लाइट है ना तो उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, फिर विंडो क्यों बनाई। कॉस्ट भी वेस्ट की हमने, और उसका हमने जो सनलाइट है उसको हार्वेस्ट भी नहीं किया। तो उस विंडो से अगर कर्टेन को साइड पे किया जाए तो डे लाइट हम उसको हार्वेस्ट करें, दिन की रोशनी में हमें इनसाइड योर बिल्डिंग हमें बल्ब वगैरह जलाने ना पड़े। उसी विंडो को अगर आप ओपन कर देंगे तो प्रॉपर वेंटिलेशन, अगर आपका एयर फ्लो प्रॉपर डिजाइन हुआ है, वेंटिलेशन का जो आपका डिजाइन है वो प्रॉपर है, तो उससे आपका एयर फ्लो होगा, तो आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी दिन का टाइम में। तो वो आप सिर्फ फैन से ही आप गुजारा कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बिहेवियर्स हैं, जो आप चेंज करेंगे तो ओवरऑल हमारी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो, सॉरी, एनर्जी कंजर्वेशन हम कर सकते हैं, और इससे एनर्जी डिमांड भी हमारे रिड्यूस हो सकती है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आईटी टीम से रिक्वेस्ट है वो जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्प्ले कर देना, कि उस पे हम अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने बात किया कि हम लाइट्स वगैरह और बल्ब, सॉरी, लाइट्स, फैन और मोबाइल चार्जर वगैरह उनको ऑन छोड़ देते हैं, हम इतना गौर नहीं करते। और 100% लोगों ने यही कहा है कि वो जो टर्निंग ऑफ लाइट है उससे हम जो एनर्जी सेविंग है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं डेली लाइफ में। नेक्स्ट। जी एग्री, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड अडॉप्ट होगा तो उससे ओवरऑल एनर्जी डिमांड जो है वो रिड्यूस होगी। तो इट मीन मेजर जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस, वो इस बात को एम्फेसिस कर रही है कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड वो इंप्लीमेंट होना चाहिए अक्रॉस द कंट्री। तो सबसे ज्यादा तो वही है जो बिजली के बिल आ रहे हैं। अभी भी जो यूनिट है वो काफी इंक्रीज हो गया है, जो आगे नेक्स्ट ईयर में और इंक्रीज होगा, तो ये अफोर्डेबल नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इवन के मिडिल लेवल जो हम हैं मीडियोकर्स, उनके लिए भी अफोर्डेबल नहीं रहेगी। तो मेजोरिटी जो लोग हैं उनके लिए यही है कि फाइनेंशियल जो इंक्रीमेंट है बिल्स में वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बिल्डिंग, ये वही हमने जो बात की थी, हमारा बिल्डिंग एनवेलप प्रॉपर डिजाइन नहीं है, बिल्डिंग इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है, इस वजह से आपको विदाउट एसी विदाउट फैन आप अपने घर में कंफर्टेबल फील नहीं करते। वही कंफर्टेबल आप फील करेंगे जब आप ये बादशाह मस्जिद, शाही किला और ये जो आपकी एंशिएंट बिल्डिंग है उसमें जाएंगे, तो आप विदाउट एसी विदाउट फैन कंफर्टेबल फील करते हैं। वजह क्या है, एक बिल्डिंग हाइट है, उनका वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर है, और नंबर सेकंड बिल्डिंग इंसुलेशन। तो उससे आपका ओवरऑल जो हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होती है इनसाइड योर बिल्डिंग, और आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मेजोरिटी का यही एस्पेक्ट है कि आप इनसाइड योर बिल्डिंग आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। सेम पॉइंट, बिल्डिंग इंसुलेशन नहीं है, और इसकी वजह से आपका ओवरऑल जो एनर्जी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, और आपका जो बिल्ड है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। पाकिस्तान में एक स्टडी है, उसके मुताबिक 92% जो रूफ टॉप है वो ब्रिक टाइल से फिनिश्ड हुई है, और 3% to 4% रूफ टॉप है वो अनफिनिश्ड है। जो उन्होंने आरसीसी की स्लैब डाली है बस वही, उसी की फिनिशिंग हुई है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो 92% एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो हमने रूफ टॉप को जस्ट ब्रिक टाइल से कर दिया, और जितनी भी हीट होती है उसको सन हीट को ऑब्जॉर्ब करती है, क्योंकि एक स्प्रेड एरिया, सारी सन हीट आएगी उसको ऑब्जॉर्ब करेगी, और फिर उसी को वही हीट नीचे पेनिट्रेट करेगी। तो अगर आपका जो रूफ टॉप है वो प्रॉपरली फिनिश्ड होगी, एनर्जी एफिशिएंट होगी, तो आपका जो हीट है वो पेनिट्रेट नहीं करेगी, वो रिफ्लेक्ट बैक इनटू द एयर। तो वो अगर 50-60% भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है तो एक काफी बड़ा ये मार्जिन है जो आपका ओवरऑल कूलिंग और हीटिंग लोड है उसको रिड्यूस करेगा। तो ये कुछ एक्सपेंसिव सोल्यूशन भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो आपका रूफ टॉप की फिनिशिंग है वो एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। जैसे मैंने बताया, सोलर चिप्स एक नया मटेरियल आया है, बाकी चिप्स भी हम करते हैं, काफी लोग हैं जो रूफ टॉप पे चिप्स लगाते हैं जो कन्वेंशनल चिप्स है। ये सोलर चिप्स यूज करके देखें, ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट है, 5-6 रुपए पर केजी उसका कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। उससे ये होता है कि आपका जो हीट है वो 80% हीट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। फिर आपका हीट रिपेलेंट पेंट्स हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, यही आपने जो ब्रिक टाइल है यही यूज करनी है,
तो आप जंबो लोन भी वो कर सकते हैं, आप सैंडविच बना लें जंबो लोन का और उसके ऊपर आप ये जो ब्रिक स्टाइल है ये यूज कर लें, तो उससे भी आपको ओवरऑल जो सन हीट है वो पेनिट्रेट नहीं करेगी आपके बिल्डिंग के अंदर, तो उससे आपको रूफ टॉप जो वो एक्ट करेगी एज अ बिल्डिंग इंसुलेशन। नेचुरल लाइट तो हमारे घरों में मेजोरिटी केस में हार्वेस्ट होती ही नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, हमारा एक माइंड सेट हुआ है कि फ्रंट साइड पे, घर के फ्रंट पे एक बहुत बड़ी विंडो दे देते हैं और उसके आगे फिर हम या तो सिंगल लेयर या डबल लेयर में हम कर्टेन लगा देते हैं, और कर्टेन भी लगाते हैं सबसे मोटे कपड़े वाले, ताकि गलती से भी सन हीट अंदर ना आए। तो बाकी वर्ल्ड में ये ऑपोजिट प्रैक्टिस है, वो जो भी विंडो लगाते हैं उसको सनलाइट हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। उसके अगर कर्टेन लगाना भी हो तो वो मैश वाला कर्टेन लगाते हैं जिससे सनलाइट इजीली अंदर पेनिट्रेट हो। तो अगर आपका विंडो का प्रॉपर डिजाइन होगा, विंडो शेडिंग का प्रॉपर डिजाइन होगा, तो जस्ट सन की लाइट अंदर पेनिट्रेट करेगी, हीट अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो उससे ही होगा आपका ओवरऑल जो एनर्जी डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट। So this is all from my side. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Zishan. Now I would request upon the stage a very precious and intellectual man, Mr. Muhammad Abdullah Khan Sumbul, the Federal Secretary for Science and Technology, to share his views with us. Madam, with your permission, I'll do it from here. Yeah, sure. Just wanted to share an update with you. The Honorable Minister just left and he had very good words to say about the presentations and the quality and content of them. So my compliments to all those who made presentations and to the MD himself. He also has advised us to take the entire action plan once it is, finalized, after incorporating the views and opinions that are coming through all the time today, and maybe even later. He wants us to take it to the Prime Minister directly, right? And he made a commitment to me that he's going to speak to the Prime Minister himself and advise me to get in touch with the staff immediately, so that we get a time immediately after Ashura. Ashura is on the 29th of July. So we, I think, should be targeting any date between 1st and 3rd of August to make a presentation to the Prime Minister. And I think this would really augur well for the implementation phase. So lots to look forward to. Just wanted to share this news with you and this advice. I think this is very well taken. Thank you, Madam. Thank you, sir. Now I would request the chair of this session, Mr. Muhammad Irshad Khan, the project manager of GIZ, to come on stage and share his views with us. Please, sir. Honorable Chief Guest, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Good afternoon. So it has been an honor for me to be here today. Actually, I have to replace my country director who was somehow busy today, and just to take over his position and share this session. Overall, it was somehow like the secretary pointed out, great presentations and very relevant today to the situation where we are today, facing enormous energy challenges, not only to feed our society with the proper energy needs and to fulfill its demand, but secondly also we need to reduce our reliance on imported and expensive fossil fuel, which has been the biggest challenge for every government and overall for this society, to cope with our, inflation rates and to manage somehow and to reduce the trade deficit. So the buildings where, the peak demand is at 18,000 megawatt, which is somehow 60% of our overall demand, that's really the focus of attention. And energy efficiency building code is the right step in the right direction. We have been much behind, even from the neighboring countries and also across the globe, that to somehow incorporate these energy efficient practices, being in the envelope of the building, being the appliances of the building, and being overall, the comfort level of the building. So we have been always, like my
Honorable Minister and my colleagues, they pointed out with a couple of examples that we have huge windows, then we have curtains, and then we have a big chandelier, just to illuminate and provide the lighting in the room. So we have also to adopt behavioral changes. It's not only the building code, it requires also behavioral changes. It also requires awareness campaigns. It also requires investment, in high efficient in buildings, like the building lifetime is 50 to 60 years. And overall, the insulation and the efficiency requirements somehow are, the payback is about 5 to 8 years. So it's high time that we focus on energy conservation and efficiency. And I think this conference today, or this seminar and this launching and the overall sessions that were somehow designed to serve the purpose, I think that's a great milestone which will somehow be instrumental in making all these efforts realized in the near future. So I thank you all, and that's all from my side. Thank you so much, sir. Dear audience, let's come together, enjoy a delightful meal, and we are going to take a prayer break as well. So we will continue after that, maybe 1:20, sir. Okay. So see you again after lunch break and prayer break. Thank you so much.
Thank you, Ms. Saima. मैं आपको जो नीका की अप्लायंसेस की रेगुलेशंस हैं इसका जो थोड़ा सा इसका ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा और इसका जो करंट स्टेटस है उसके बारे में इंफॉर्म करूंगा। स्लाइड शो कीजिएगा प्लीज आईटीटी। जैसा कि अभी मेरे कोलीग जिशान साहब की जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के ऊपर प्रेजेंटेशन थी उसमें उन्होंने एक सिचुएशन को हाईलाइट किया था कि पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी की डिमांड कितनी है और फिर बिल्डिंग सेक्टर के अंदर कूलिंग के लिए कितनी चीजें जो है और कितनी डिमांड उसके ऊपर हमारी सर्फ हो रही है। इसी के ऊपर जो हाजरीन से फीडबैक लिया गया और उनसे पूछा गया कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इन बिल्डिंग सेक्टर कौन सी ऐसी जो मैयर्स हैं जिनको वो समझते हैं कि जरूरी है, तो फर्स्ट जो मैयर जो सेलेक्ट की थी हाजरीन ने वो थी बिहेवियर से रिलेटेड, दैट इज स्विचिंग ऑफ द लाइट्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज। और जो सेकंड उसमें ऑप्शन थी वो एफिशिएंट अप्लायंसेस के ऊपर थी कि एफिशिएंट अप्लायंसेस जो है वो होनी चाहिए हमारी बिल्डिंग सेक्टर में और सेम इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी उस पर फोकस होना चाहिए। जो इसमें अब एफिशिएंट अप्लायंसेस को जो है हमने उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है या आइडेंटिफाई किस तरह करना है, इसका मैंडेट जो है वो नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एक्ट 2016 जो है वो नीका को देता है कि उसमें एक सर्टेन जो बेंचमार्क है एफिशिएंसी का प्रोडक्ट्स का, उससे नीचे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन करने का, उन
नेक्स्ट कीजिए प्लीज। गवर्नमेंट को भी है, कंज्यूमर्स को भी है और मैन्युफैक्चरर्स को भी है। गवर्नमेंट के केस में ये है कि जब एफिशिएंट प्रोडक्ट्स होंगे तो हमारी जो सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होगी तो हमारा इंपोर्ट का जो फ्यूल बिल है वो जो हमारा रिड्यूस होगा, और उससे रिलेटेड जो जितने भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी है वो मोस्टली फॉसिल फ्यूल डोमिनेटेड पावर प्लांट से ऑपरेट होती है, तो उतना ही ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस जो हैं वो भी कम होंगे। कंज्यूमर्स के लिए ये फायदा है कि एक तो उनको मॉनिटरी बिल जो उनका है इलेक्ट्रिसिटी का है या गैस का है वो उनका कम होगा, और फर्दर उनको में अवेयरनेस क्रिएट होगी एक एफिशिएंट प्रोडक्ट को परचेज करने के बारे में। कंज्यूमर्स के लिए हमारे ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए हमारे ये उसका एडवांटेज है कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकेंगे जो कि एक कंप्लाई करेगा सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस को, और वो प्रोडक्ट कंपेटिटिव होगा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए। अभी भी प्रॉब्लम है, सॉरी, इसका आ रहा है कि मैं नेक्स्ट जी नेक्स्ट लेबल की प्लीज दिखा दें था। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज जी। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के नजर आ रहा है ये एक जो है फैन के लिए नीका का लेबलिंग स्टिकर है, जिसके ऊपर हमें उसका तमाम इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो 3 स्टार है, उसकी नेम प्लेट क्या है, और फर्दर उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं जिस तरह QR कोड उसमें नजर आ रहा है। और ये जो लेबल है ये अप्लायंस के ऊपर फिक्स होगा, और इसका एक पूरा प्रोडक्ट रजिस्ट्री सिस्टम के थ्रू एक पूरा सिस्टम मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसके थ्रू ये आप वेरीफाई कर सकेंगे कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है। अभी तक नीका ने 5 अप्लायंसेस की रेगुलेशंस बनाई हुई हैं, जिसमें फैंस हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, LED लाइट्स हैं और मोटर्स हैं। ये रेगुलेशंस जो हैं ये नीका बोर्ड से प्रिंसिपली इनके जो मैकेनिज्म है वो प्रिंसिपली अप्रूव्ड है। फर्दर इसमें हमें ये एडवाइस मिली थी कि जो रेगुलेटरी बर्डन है उसको रिड्यूस किया जाए ताकि प्रमोट किया जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। तो इसमें क्यों PSQCA के साथ मिलके हमने जो अपने प्रोसेसेस हैं उनको इंटीग्रेट किया है काफी हद तक, ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कोई भी ऐसा प्रोसेस 2 दफा या सेपरेट ना करना पड़े जिससे के रेगुलेटरी बर्डन जो है उसके ऊपर बढ़े। इसके ऊपर ये हमने जो वॉलेंटरी नीका ने फैन की लेबलिंग का काम स्टार्ट किया था 2016 में, उसके अंदर अभी तक हमारे पास 24 फैन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके 43 फैन मॉडल्स रजिस्टर्ड हैं, और उनके ऊपर सिक्योरिटी स्टिकर्स भी इशू होते हैं जो कि अभी तक तकरीबन 6 लाख से ज्यादा नीका इशू कर चुका है। ये साथ ही नीका उसको अपने ऐप के थ्रू मॉनिटर भी कर रहा है और ट्रैक कर रहा है कि ये फैंस कहाँ पे यूज हो रहे हैं। इसमें जब आप देखेंगे तो पंजाब में इनकी मोस्टली जो है वो डिसेमिनेशन है एफिशिएंट फैंस की। उसकी मेन वजह ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपने पेपरा रूल्स के अंदर MRS लिस्ट में एफिशिएंट जो फैन है, नीका लेबल्ड फैन है, उसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है कि जितनी भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट बल्क में होगी उसको उसमें नीका लेबल्ड फैन जो है वो यूज होगा। नीका इज ट्राइंग, बोर्ड का ये डिसीजन भी है कि वो कि ये जो सेम प्रैक्टिस है ये तमाम अप्लायंसेस के लिए बाकी तमाम प्रोविंसेस में भी बहुत जल्द जो है ये इसका इतलाक हो जाए। हमारी रेगुलेशंस को नीक का जो एक्शन प्लान है जो सभी साहब ने सुबह जिसके बारे में बताया है उसका भी साथ ही उसमें भी ये प्रायोरिटी एक्शन एरियाज हैं, और इससे हमें जो फर्दर इसके कवर मिलता है इन रेगुलेशंस को कि हम इनको नीक एक्शन प्लान के अंडर जो है इन रेगुलेशंस को फर्दर इनका जो नफाज जो है वो कर सकें।
मैप्स बनाने से जो हमारा मिनिमम 1 स्टार के ऊपर भी अगर हम उनको कैलकुलेट करें तो हर जो अप्लायंस है, फैंस हैं, एलईडीज हैं, मोटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, उनके साथ कितनी एसोसिएटेड जो एनर्जी की सेविंग है एनुअल, कितने $1 मिलियन की सेविंग है और कितने एमिशंस जो रिडक्शन हो रही हैं, उनकी ये कैलकुलेशंस आपके लिए हैं। जो एनर्जी कंजर्वेशन ड्राइव थी प्राइम मिनिस्टर की, जिसको कन्वीन कर रहे थे फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब, उनके अंदर एक कमेटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर फॉर्म हुई थी और उसके अंदर ये डिसीजन लिए गए थे कि अंडर द नीका एक्ट, जिस तरह मैंने बताया कि हम जो इनएफिशिएंट प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर सकते हैं, तो इनकैंडेसेंट बल्ब्स को बैन किया गया फरवरी में कि वो 1 जुलाई 2023 के बाद इनकैंडेसेंट बल्ब्स जो हैं वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि वो इनएफिशिएंट, और उसकी जगह हम एलईडी को प्रमोट करेंगे। फर्दर इसमें जो इनएफिशिएंट फैंस हैं जो कि मैप्स लेवल से लो होंगे, उनके लिए भी एसआरओ मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नोटिफाई किया हुआ है कि वो 1 जुलाई 2023 के बाद इनएफिशिएंट फैंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, मैन्युफैक्चर नहीं होंगे। नीका की ये एक प्रायोरिटी है कि जो ये सिस्टम होना चाहिए ये बिजनेस एनेबलिंग होना चाहिए और इसमें मोस्टली जो ह्यूमन इंटरेक्शन है जो ऑफिशियल्स का, वो मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए एक फुली ऑटोमेटेड प्रोडक्ट रजिस्ट्री सिस्टम एलईडी लाइट्स के लिए डेवलप कर दिया गया है और बाकी 4 अप्लायंसेस के लिए इन प्रोसेस है। तो इसमें जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो भी इसमें लेबल इशूअर्स हैं, वो फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और अपने लेबल्स को, एंडोर्समेंट लेबल्स को वो ऑब्टेन कर सकेंगे। टेस्टिंग लेबोरेटरीज की जहां तक की बात है, क्योंकि इसके लिए चाहिए, तो इस वक्त PCSIR में लैब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा प्राइवेट जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं एयर कंडीशनर्स के और रेफ्रिजरेटर्स के, उनके पास लैब्स अवेलेबल हैं। और थर्ड जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास सिराट की लैब जो है वो अवेलेबल है, जो जिसके भी PNAC के साथ एक्रेडिटेशन जो है वो जारी है। तो ये अप्लायंसेस की रेगुलेशंस के बारे में था। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Mr. Feroz. Dear audience, actually this presentation was divided into 2 parts. Now to present the other part of this presentation, I would like to invite Engineer Muhammad Zishan, Director, Electrical National Energy Efficiency and Conservation Authority, to come on stage and talk to us about EV charging infrastructure in Pakistan. Please. Respected Chair, MD NEECA, dear audience, Assalamu alaikum. मैं आपको EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के से रिलेटेड जो है वो हाईलाइट करूँगा कुछ चीज़ें। ये स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन इस तरह से होगी कि पहले मैं आपको EV के अंदर नीका का जो मैंडेट है उसके बारे में बताऊंगा। फिर जो है उसके बाद जो है आपको जो EV जो रेगुलेशंस हैं, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट है क्यों है और उनकी जो है पर्पस क्या है उसके बारे में बताऊंगा। और फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम चार्जिंग जो चार्जेस हैं और कनेक्टर्स हैं, उसके जो स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में। और फिर जो है जो हमने रेगुलेशंस के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है कि जो आपके पब्लिक चार्जिंग स्पॉट्स होंगे या पब्लिक बिल्डिंग्स होंगी, हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, वहाँ पे जो है चार्जिंग जो स्टेशन हैं उनकी रिक्वायरमेंट मिनिमम जो है हमने इनकॉर्पोरेट की है। और उसके बाद फिर जो आप ने जो है किसी भी जो है वो ऐप के ज़रिए जो है वो आप लोकेट कर सकते हैं अपना ट्रैवलिंग करते हुए जो नियरेस्ट आपका जो है चार्जिंग स्टेशन जो होगा। उसमें जो है नीका ने भी अपनी मोबाइल ऐप डेवलप की है, उसके अंदर भी वो अवेलेबल होगा कि आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो नीका के मोबाइल ऐप से आप उसको मैपिंग करेंगे पाकिस्तान के जितने चार्जिंग स्टेशन हैं उनकी, तो आप वो देख सकेंगे कि कहाँ पर आपको नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन मिल सकता है।
जी सबसे पहले जो है वो नीका एक्ट 2016 जो है वो नीका को एम्पावर करता है कि वो एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी मेजर्स हैं वो सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, पावर सेक्टर जो है, एनर्जी सेक्टर जो है, इंडस्ट्री सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर और बिल्डिंग सेक्टर के अंदर उसके अंदर वो उसका मैंडेट है नीका का। उसके बाद जो है वो कैबिनेट का डिसीजन भी है इसके ऊपर कि जी आपने जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और जो है ईवी बाइक्स के खास तौर पे पेनिट्रेशन, और फिर जो है ईवी पॉलिसी जो है 2019 वो नीका को ये मैंडेट देती है कि नीका ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वो इंश्योर करनी है। जी ये जो है वो जब भी कोई इंडिविजुअल जो है वो स्विच करना चाहता है आईसीटी से टू ईवी, तो ये 4 मेजर क्वेश्चन है उसके माइंड में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये सोचता है कि जो है वो ये चीपर मुझे होगा, मगर अगर मैं आईसीटी यूज कर रहा हूँ उससे मैं ईवी के ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो जो चार्जिंग है ईवी की वो मुझे चीपर होगी फ्यूल जो है फॉसिल फ्यूल से। दूसरा ये है कि वो उसके ज़हन में ये बात आती है कि चार्जिंग स्टेशन मुझे मिलेगा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे रास्ते में कहीं चार्जिंग की जरूरत पड़ती है तो मुझे चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। और नंबर 3 जो है वो ये है कि जो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन अगर अवेलेबल भी है उस पे जो चार्जिंग का जो प्लग कनेक्टर जो है वो उसको कंपैटिबल होगा उसकी ईवी के साथ कि वहाँ पे उसकी चार्जिंग हो सके। और नंबर 4 ये है कि कनेक्टर वो मिलेगा कहाँ पे। इन सारी जो ये 4 जो मेजर क्वेश्चंस हैं इनको डील करने के लिए जो है वो जरूरी है कि जो है ईवीज जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रेगुलेशंस लाए जाएं जो इन चारों चीज़ों को इंश्योर करें, और जो है जो इंडिविजुअल है उसको भी इस पे कॉन्फिडेंस हो के ये चारों क्वेश्चन उसके सॉल्व हों कि वो ईवी के ऊपर स्विच हो। ये उसके लिए जो है वो नीका ने रेगुलेशंस डेवलप किए हैं इसके। Purpose of these regulations is to sustainable development of EV charging infrastructure, यानी मशरूम ग्रोथ उसकी ना हो। ये ना हो कि वो जो है हर बंदा अपनी मर्जी से चार्जिंग स्टेशन लगा ले, ना उसको कोई स्टैंडर्ड हो, ना कोई सेफ्टी मेजर्स हो, और वो कंपैटिबल भी ना हो ईवीज के साथ, डिफरेंट जो टाइप्स की ईवीज हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है देखने की कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो उसको सपोर्ट भी कर सकता है कि नहीं। जब लोकेशन आप चूज करते हैं चार्जिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि वहाँ पे उसका जो आपका इतना लोड जो है वो ले सकता है जो आपका नेटवर्क है वहाँ पे। जो वर्ल्ड वाइड जो है वो 3 मेन टाइप्स ऑफ चार्जेस आर अवेलेबल विच आर हैव बीन अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड। एक लेवल 1 चार्जर है जो कि आप क्या कह सकते हैं कि घर के ऊपर जो आप अपनी जो सिंगल फेज सॉकेट होती है उसके साथ जो आपकी ईवी के साथ जो है सिंपल जो उसकी चार्जिंग वायर होती है उससे आप चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए है कि वो सिंगल फेज के ऊपर उसका टाइम जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है चार्जिंग का। अगर आपने 80 माइल्स की फुल बैटरी चार्ज करनी है तो उसके लिए मिनिमम 16 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो ओवर द नाइट वो चार्जिंग होती है। लेवल 2 चार्जिंग में ये होता है कि उसके लिए कम टाइम रिक्वायर्ड है और 3.5 आवर्स रिक्वायर्ड हैं, और वो पब्लिक जो इतने आपके जो हैं वो पब्लिक स्पॉट्स हैं, पार्किंग स्पॉट्स, वहाँ पे वो अवेलेबल हो सकता है। और जो है सबसे जो फास्ट जो लेवल 3 है वो है डीसी फास्ट चार्जर, जिसमें 30 मिनट्स के अंदर जो आप 80 माइल्स की जो बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं। ये लेवल 1 चार्जर की डिटेल है कि इसमें जो है वो घर के अंदर सिंगल फेज के ऊपर यूज हो सकता है। जो शॉर्टर कम्यूट है उसके लिए ये ज़्यादा फिजिबल है कि अगर आपने विद इन द सिटी कम्यूट करना है तो आप जो है वो सारा दिन वो अपनी ईवी को उसको चलाएं और शाम को जाके घर पे जाके उसको चार्जिंग पे लगा दें। 50 किलोमीटर के अंदर 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 जो है आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। दो उसमें ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि उसका जो है आपको फिर वो चीप इसलिए पड़ेगा कि जो आपकी डोमेस्टिक रेट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या आप अपने घर पे सोलर लगा के उसको चार्ज कर सकते हैं, या फिर जो है वो जो आपका वैसे भी डोमेस्टिक रेट इलेक्ट्रिसिटी का वो कम है एज कम्पेयर टू अगर आप उसको चार्ज करते हैं डीसी फास्ट चार्जर या कमर्शियल चार्जर्स के ऊपर। नंबर 2 जो है वो लेवल 2 चार्जर है, जिसका जैसे भी पहले मैंने बताया कि पब्लिक स्पॉट्स के ऊपर ये ज़्यादा सूटेबल है, जो कि जैसे ऑफिस हो गए या रेस्टोरेंट्स हो गए, इस तरह की जगहों के ऊपर के जहाँ पे आके अपना जो है भी अपनी बंदा पार्क करता है, तो जब तक वो वहाँ पे बिजी है तो उसकी जो है चार्जिंग होती रहती है। तो ये जो है वो तकरीबन 3.5 आवर्स में लगते हैं, और ये भी जो है वो सिंगल फेज और 3 फेज दोनों सॉकेट्स के ऊपर इसकी चार्जिंग हो सकती है। थर्ड जो है वो लेवल 3 डीसी फास्ट चार्जर है।
ये जो है वो सूटेबल है ऑन द मोटरवेज, हाईवेज, नेशनल हाईवेज, जहाँ पे कोई बंदा लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है तो रास्ते में उसको चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो 30 मिनट्स के अंदर उसकी जो है वो 80% तक उसकी जो वो बैटरी जो है वो चार्ज हो सकती है। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो ये है कि सारी जो है स्पेशली जो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स हैं वो, और जो या कुछ ईवीज भी हैं वो कंपैटिबल नहीं है डीसी फास्ट चार्जर के साथ। दूसरा ये है कि अगर आपकी बैटरी जो है वो 80% तक वो है अवेलेबल तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और फिर ये बैटरी की लाइफ पे भी इसका जो है वो इम्पैक्ट होता है कि बैटरी की लाइफ इससे कम हो जाती है। ये 3 टाइप्स ऑफ डीसी फास्ट चार्जर हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं रेगुलेशंस के अंदर, जिसमें चैडेमो है जो कि मोस्टली जापानीज जो व्हीकल्स हैं उनके लिए जो यूज़ होता है, और जो है वो नंबर 2 पे जो है वो कॉम्बो कंबाइंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि यूरोपियन यूनियन और ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ये ज़्यादा अडॉप्टेड है, और यूरोपियन यूनियन के अंदर ये यूज़ होता है। और थर्ड जो है वो टेस्ला फास्ट चार्जर है जो कि टेस्ला के व्हीकल्स के लिए यूज़ होता है। ये तीनों हमने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए रेगुलेशंस के अंदर। ये कुछ हमने रिक्वायरमेंट्स रखी हैं कि जो एग्जिस्टिंग या कोई न्यू कंस्ट्रक्शन जो है आपके जो शॉपिंग मॉल्स हैं, प्लाजाज हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ पे परसेंटेज की अगर आपकी पार्किंग स्पॉट्स हैं तो उनके कितने परसेंट जो है वो ईवी चार्जिंग के लिए जो है वो होने चाहिए, वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए कि उतनी परसेंट के ऊपर जो है आप चार्जिंग स्पॉट्स के ऊपर ईवी चार्जिंग के ऑप्शन अवेलेबल हो, जिसमें जो है हाई राइज रेजिडेंशियल के ऊपर 5 to 10% है, रिटेल रेस्टोरेंट्स के अंदर 2%, ऑफिसेज में 3%, इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्सेस में 1%, और जो है म्यूनसिपल और 3%, और जो है रिक्रिएशनल उसमें 1%, और इसके अलावा जो बाकी जनरल है उनके ऊपर 3%। ये कुछ ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जब के लोकेट करने के लिए नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन, जिसमें ओपन चार्ज में ऐप है, प्लग शेयर है। इसी तरह से नीका की जो है वो जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर भी हम इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी चार्जिंग स्टेशन हैं उनकी मैपिंग करके तो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ताकि नीका की जो मोबाइल ऐप से आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपना फाइंड कर सकते हैं कि नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन आपका कौन सा होगा। जी, ये सारा चार्जिंग स्टेशन के ऊपर था। थैंक यू। और अभी जो हमारे जो स्लाइडर के ऊपर थे क्वेश्चन की फीडबैक जो है वो ये है कि जो 67% लोग ये समझते हैं कि जो है हाई प्राइसेस ऑफ ईवीज जो हैं वो मेजर बैरियर हैं अडॉप्शन ऑफ ईवीज के अंदर। नेक्स्ट प्लीज। अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग स्टेशन है वो 67% लोग समझते हैं कि रेगुलेशंस के अंदर मेजर जो चीज़ है जिसको वो होना चाहिए, डील होना चाहिए कि ये भी ईवी की जो है अगर वो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ज़्यादा लोग ईवी के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है कि क्या उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम मेजर हो सकता है, तो वो इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हमारी ऑडियंस का ख्याल है कि इसके ऊपर जो है वो बैरियर होगा इसकी डेवलपमेंट के अंदर। ये 100% लोगों का ये ख्याल है कि जो है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए अच्छा तो जो है वो इसको कैटलाइज करेगा कि ज़्यादा लोग ईवी के ऊपर शिफ्ट हों। एग्जिस्टिंग के ऊपर जो है वो सबका इक्वल सा मिक्स्ड सा रिस्पॉन्स है कि अगर जो क्योंकि एग्जिस्टिंग कोई है ही नहीं ना, से कोई रेगुलेशंस कुछ है ही नहीं, तो इसके होते हुए तो ईवी की जो है वो इससे ये वो होता है कि ईवी की रेगुलेशंस कितनी ज़रूरी हैं ताकि ईवी की रेगुलेशंस आए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ताकि लोग जो है ईवी के ऊपर शिफ्ट हों। थैंक यू वेरी मच। सर वहीं से बात करेंगे, सर वहीं से बात करेंगे। Okay. Thank you so much, Mr. Zishan. Now I would like to request the chair of this session to come on stage and share his views with us. जी, अस्सलाम वालेकुम। नीका के साथ बेसिकली आई एम शहजाद जी, मैं क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी मेन इंडस्ट्री है, लेकिन बेसिकली आई एम आल्सो रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान लाइटिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, और हमारी जो एफिलिएशन है नीका के साथ ये बहुत पुरानी है, और इन्होंने बड़ी ही मेहनत से
special thanks to CEO and the project manager and all the team जिन्होंने बड़ी शानी से और मेहनत से इस पूरे प्रोसेस को किया है और इसमें फॉरेन कंसल्टेंट्स भी इन्वॉल्व थे और स्पेशली डोनर एजेंसीज का शुक्रिया अदा करते हैं लाइक GIZ जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कामयाब करवाने में फंडिंग की है और बेसिकली ये बड़ा एक स्कैटर्ड सेक्टर था जिसमें कि प्रोडक्शन हो रही थी LED लाइट्स की, लेकिन कोई भी उसकी रेगुलेशन नहीं थी, मालूम नहीं था कि बनाया कैसे जाएगा, इसको कैसे इसको रेगुलेट किया जाएगा। तो इसमें तमाम चीज़ों में जो सपोर्ट है हमें वो नीका की तरफ से मिली है और इन्होंने हमें बतदरीज हमारे जितने स्टेक होल्डर्स थे, जितने मैन्युफैक्चरर्स थे, ऑलमोस्ट कोई 30-40 मैन्युफैक्चरर्स इनकी मीटिंग अटेंड करते रहे हैं रेगुलरली और उसमें फिर इसको ड्राफ्ट किया गया है, समझाया गया है, उनको जो मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कैसे करवाना है, डिज़ाइंस को इम्प्रूव कैसे करवाना है, लैब्स जो हैं PCSIR में क्रिएट की गई हैं, सिराड में क्रिएट की गई हैं और मज़ीद इसकी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा रहा है। तो इससे जो बेसिकली ये जो मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं किसी भी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ कि एनर्जी बचती है बल्कि इससे इतने सारे और हिडन चीज़ें हैं जो कि शायद इस नॉर्मली एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हम इसको हाईलाइट नहीं करते, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि इसके और एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहली बात यह है कि कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। जो बायर है उसको नहीं मालूम कि प्रोडक्ट क्या लेने जा रहा है, वो तो जस्ट एक प्रोडक्ट मार्केट जाता है, वो एक प्रोडक्ट पे जिस पे लेबलिंग होगी जिस तरह 3 स्टार या 4 स्टार या 5 स्टार उसको बाय करेगा। लेकिन मेन एडवांटेज ये होगा कि उसको एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है जिससे सिर्फ उसकी एनर्जी एफिशिएंसी इंश्योर नहीं हो रही बल्कि लॉन्ग लाइफ भी इंश्योर हो रही है। कि अभी आप लैंप लेके आते हैं तो सकता है 2 महीने बाद खराब हो जाए, 3 महीने बाद खराब हो जाए, जबकि ये जो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ये सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी को लुक आफ्टर नहीं कर रहे बल्कि इसकी कंप्लीट लाइफ स्पैन को लुक आफ्टर कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये और बहुत सी चीज़ों को आपकी जो सेफ्टी को देख रहे हैं, यानी कि आपकी जो फोटोबायोलॉजिकल टेस्टेड ये इसके अंदर एक मेन रिक्वायरमेंट है जिसमें कि आपकी जो लाइट एमिट हो रही है सोर्स से वो आपकी आईज और स्किन के लिए कितनी सेफ है, क्योंकि अगर ये लाइट ठीक नहीं होगी तो ये अल्टीमेटली आपके रेटिना को भी डैमेज कर सकती है। इसमें जो अल्ट्रा वायलेट का कंपोनेंट है तो वो आपको आपकी स्किन और आईज को जब आप लॉन्ग टाइम में यूज करेंगे तो उसको डैमेज इफेक्ट आ सकता है। इसी तरह इसमें बड़ी एडवांस चीजें हैं लाइक फ्लिकर इफेक्ट को भी इन्होंने देखा है कि फ्लिकरिंग से ये होता है कि आप ज़हनी तौर पे आप थक जाते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं, तो उसमें लो फ्लिकरिंग लाइट्स के भी स्टैंडर्ड में जो है ये शामिल है। तो इसके ये जो कहने का मतलब ये है जी कि ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ एनर्जी तक नहीं है, इसमें और बेशुमार चीज़ें हैं। और इसके अलावा जी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल पीछे डिस्कस भी हुई है, इसको और इम्प्रूव कर रहे हैं कि पावर फैक्टर को 0.9 किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी LED लैंप तो आप यूज़ करते हैं लाइक 6 वाट का आप लैंप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर उसका पावर फैक्टर पुअर है लाइक 0.6 है तो वो उसके जो VA कंजम्पशन है दैट इज दी एपरेंट पावर वो तो ज्यादा है, लेकिन आपका वॉट्स में बिल 6 ही आएगा, लेकिन एक्चुअली जो उसका वापडा पे लोड आ रहा है या आपका सोलर का अगर एक सिस्टम लगा हुआ है, सपोज आपका UPS लगा हुआ है या आप बैटरीज पे पावर ले रहे हैं, तो जो उसका बैकअप टाइम है वो 40% रिड्यूस हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो अगर आपकी उसकी पावर फैक्टर बेहतर है तो आपका उसका बैटरी का बैकअप टाइम इंक्रीज हो जाएगा 40%। तो ये भी आपको ख्याल रखना है कि जब आप प्रोडक्ट लेते हैं बाय करते हैं तो उसका जो पावर फैक्टर है उसको जरूर चेक किया जाए। तो इसी स्टार रेटिंग्स एक आम बायर के लिए जो कंज्यूमर है उसके लिए स्टार रेटिंग्स को बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज नेका ने लॉन्च की है और वेरी इजी टू बाय। वो जस्ट स्टार देखेगा कि 4 है 5 है, अगर वो बाय कर सकता है तो 5 स्टार बाय करे। इसी तरह जो एक हिडन चीज है कि पाकिस्तान में अभी आपके पास जनरेशन के इश्यूज इतने नहीं है, IPPs बेशुमार हैं। इस वक्त हमारा जो सबसे वीक है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आपका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इलेक्ट्रिसिटी का वो वीक है और उसको इम्प्रूव करना आसान नहीं है। तो उसमें बेस्ट ये है कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं ऐसी यूज की जाएं कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ जाए। लाइक जब आप हाई पावर फैक्टर की चीज यूज करेंगे तो वो जो 100 kVA का ट्रांसफार्मर है जो आपको ऑलमोस्ट 60 किलोवाट्स दे रहा है अभी,
तो वो 80-90 किलोवाट्स आपको पावर देने लग जाएगा। तो 30% उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आप जब आप हाई पावर फैक्टर की कोई भी चीज यूज करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि जो करंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 30% लोड लेने के मजीद काबिल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ नेका, और उन्होंने मतलब एक बड़ी इसमें लंबी तवील जद्दोजहद है पूरी टीम की, और मैं सीईओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हसनैन साहब का भी और पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस फोरम पे आके आपसे बात कर सकूँ। थैंक यू जी। Thank you so much, sir. Well, their commendable progress has been made, but there is still much work to be done. Energy efficiency and conservation should be integrated into every aspect of our life, from residential practices to industrial operations. Now, I would like to invite Dr. Sardar Moazzam, the Managing Director of National Energy Efficiency and Conservation Authority, to come on stage for the closing remarks. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सेशन हमने आज सुबह शुरू किया था तो द हॉल वाज फुल, सारे लोग बैठे थे और हम यही देख रहे थे कि इस स्ट्रगल में, इस कोशिश में, इट वाज अ लॉन्ग डे एंड आई थिंक नाउ टेबल्स आर थिन, पीपल कुछ चले भी गए, बट आई थिंक ओवरऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट टू नीका टीम for all their effort, for very sleepless nights, for their support. I think jitna is team ne kaam kiya, that would have not been possible without all of them. I think jo NEECA ki team ke jo aapne presentations dekhi, iske piche jo aapne kaam dekha, jaise industry association ne bhi zikr kiya कि the level of engagement हमारी जो lighting team की थी, I think it was very commendable and we really appreciate all of their efforts. Along with that, I must appreciate all the participants in this room, as well as बहुत सारे लोग जो हमें social media पे live feeds के through देख रहे हैं, अपना input दे रहे हैं, discussions कर रहे हैं. I think we're very grateful for them as well for listening us and reviewing all what we are saying here. जो भी process जो हमने follow किया, I think this was a national consultation where we were looking for your comments, your suggestions, your feedback to make it more transparent. Our IT team ensured कि आपको ये एक system नजर आए कि जैसे जैसे आप जो चीजें update करते जाएं, जो comments देते जाएं, जो feedbacks आपसे हमें मिले, वो transparently आपको दिखाए जाएं. I think this is the first step. बाकी भी जो comments इन सारे documents के ऊपर, इस process के अंदर और इसके साथ साथ जो हमने different stakeholders, ministries, universities, think tanks, donor agencies, सबके साथ share की, I think we received a very healthy, very good response. And I think they're very critical because when we will take it forward to the next stage, which is that कुछ चीजें ऐसी हैं जो NEECA board से approved हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो we will be getting them approved, and the next step is कि हम इसको cabinet के पास ले जाएंगे for some of these things जिनका उधर जाना जरूरी, to get approval from the federal cabinet and the prime minister कि उनके notice में ये लेके आना और इन चीजों को आगे लेके चलना. But I think this journey is not, it's just started. This is the beginning, and I think we also see one important aspect which has not been discussed today because of so many things that we already have available with us. That is the financing part. I think we have a colleague from State Bank sitting with us. During the break time, we were having the session कि green banking guidelines के ऊपर ये काम कर रहे हैं, buildings, small and medium enterprise के ऊपर काम कर रहे हैं. I think this is also one of the important area जिसके ऊपर NEECA Energy Conservation Fund, ECF,
I also have a charge of CEO of ECF, जिसके अंदर काफ़ी सारे project implementation इस तरह की activities पे काम हो रहा है. I think इस वक्त भी with the support of WWF textile industry के ऊपर काफ़ी extensive ये काम कर रहे हैं, training of trainers program के ऊपर there is a lot of work going on, and in itself ECF की restructuring to make it a very vibrant organization, that is also going on. But I think कि ये वाले जो aspects हैं, especially all the policies, all the regulations, and all what we're trying to do here, it will not be successful without financing. So we have already signed and we are already got approved some of the donor funded projects or donor funds कि इस policy support के लिए वो funds हमें provide किए जाएं या already approved हो गए. And that's why we are bringing it forward कि it's not just a document which will be once approved and sitting in the आपके shelves में. I think we have enough, we are working on it and already secured a decent amount of funds that from now onward, it will be not just, a document in the shelf, but actually we will be pushing it forward, getting it approved. And then we want to show its impact आपकी lives के अंदर, अपनी life के अंदर, आप सबकी जिंदगियों में नजर आए कि energy efficiency आपके mobile phones के ऊपर, आपकी life के अंदर, आपके appliances के अंदर, आपकी through labeling regime, आपको ये नजर आए कि आप किसी शॉप में नेक्स्ट टाइम जाएं तो आप उधर कोई प्रोडक्ट किसी सेल्समैन के कहने के बजाय एक ऐसे लेबल को देख के खरीदें जिसके ऊपर लिखा हो कि ये 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार है. आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा, चाहे वो मोटर्स, चाहे वो LEDs, चाहे वो फैंस हैं, चाहे वो एयर कंडीशनर्स हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर्स हैं, and then even in the gas sector as well. So we are actively working on all of these things, and with the passage of time, you will keep listening, you will keep updated. हमारे social media को अगर आप follow करें तो you will be seeing all these details available over there. कि क्या progress हो रही है, आज किधर खड़े हैं, next steps पे क्या करने. And that's where we are working together with all the stakeholders, with industry, with government, with provincial agencies, with think tanks. And I think this is where we see that we need an ecosystem. उसके अंदर आप सब ने role play करना. And then we can take it forward. And that's what we want. That जैसे सुबह मिनिस्टर साहब ने भी ये जिक्र किया कि this is how we want to take forward कि एक impact, एक behavioral change और एक culture energy efficiency का हम इस मुल्क में लेके आए. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का. Well, thank you so much, sir, always for your kind gestures towards your team. Well, thank you so much for your participation in this session together. Let us work towards a more energy efficient and sustainable future for Pakistan. Let's conserve energy, preserve our environment, and build a prosperous nation. Thank you so much, and Allah Hafiz. ये चाय सर्व की है तो प्लीज चाय पी के जाइएगा.